हेलो। हेलो। Yeah, हेलो। hello. हेलो। 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 हेलो, हेलो, आप लोग आप प्लीज लोग अपना प्लीज माइक अपना म्यूट माइक रखिए। म्यूट रखिए। हेलो। जस्ट Hello, hello. गुड मॉर्निंग, सॉरी, अभिषेक सर। गुड इवनिंग टू ऑल. First of all, I welcome all the learners of MSW, those who have taken admission in July 2020 session. हमको पता है आप सभी लोगों ने जुलाई 2020 सेशन में एडमिशन लिया हुआ है MSW प्रोग्राम में. हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप मैं सभी आप से सभी से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा करूंगा कि आप लोग अपना माइक म्यूट रखें प्लीज, वरना डिस्टरबेंस हो जाती है सेशन में. थैंक यू. जब तक आपको बोला ना जाए प्लीज अपना माइक अनम्यूट मत करिएगा आप सभी लोग. थैंक यू. सो आप सबको मालूम ही होगा, आपने जब एडमिशन लिया कई स्टूडेंट्स के मेल्स भी आ रहे थे. तो जो आपका इंडक्शन मीटिंग होता है वो आपका इग्नू में जो जर्नी होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. उसके लिए आपको इस इंडक्शन मीटिंग में कई सारी बातें बताई जाएंगी आपके आपके सबमिशंस के बारे में और आपके पढ़ाई के बारे में. तो वो सारी चीजें ये इंडक्शन मीटिंग में आज आपको बताई जाएंगी. आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसकी वजह से ये इंडक्शन मीटिंग्स इस बार वापस से गूगल मीट ऑनलाइन मोड में कराए जा रहे हैं. आज के इंडक्शन मीटिंग में हमारे साथ एमएसडब्ल्यू प्रोग्राम की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सौम्या मैडम है. सबसे पहले मैं डॉक्टर सौम्या मैडम का स्वागत करता हूँ रीजनल सेंटर मुंबई की तरफ से. थैंक यू मैम Thank फॉर you. एक्सेप्टिंग आवर Thank you, रिक्वेस्ट sir. to deliver this lecture. I think, ma'am, with your permission, I think we can proceed with the session now. Yeah, definitely. Thank you so much. Thank you. So I welcome Dr. Soumya ma'am, the program coordinator of MSW program, for delivering and guiding the lecture, guiding the students for MSW program. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And thanks to the entire RC Mumbai team for organizing this induction meeting and inviting me as a resource person today. Uh, First of all, I would welcome all of you learners who've taken admission in the MSW program and for being together in this journey. And now, since you are just a beginner, you should also understand this university, how this university is different from any other university. Because most of you, I assume, would be from conventional universities जहाँ पे आपने क्लासरूम अटेंड किया होगा, क्लासेस अटेंड किए होंगे, टीचर्स होंगे आपके. और जब आपने ये एडमिशन लिया ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में, तो ये एक अलग ही तरीका है पढ़ाने के लिए लर्नर्स को. और इसको समझना बिगिनिंग में ही बहुत ज़रूरी है. Because unless and until you understand the entire philosophy of ODL, you will not be able to, grasp it completely as a student. So, first of all, I would request all of you, जब आप ये लेक्चर अटेंड कर लें आज का और उसके बाद जब वापस आप घर जाएं, तो सबसे पहले प्रोग्राम गाइड ज़रूर खोल के पढ़ें. ई ज्ञान कोश, आपने इग्नू का वेबसाइट देखा होगा जहाँ पे ई ज्ञान कोश शुरू के होम पेज में एक आइकॉन आता है. उस ई ज्ञान कोश पे आप जब क्लिक करते हैं तो आगे आप बढ़ेंगे सारे स्कूल्स पे कि जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स है और डिफरेंट स्कूल्स हैं. तो स्कूल ऑफ सोशल वर्क में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे भी सारे लेवल्स दिखाते हैं कि आप किस लेवल का कोर्स कर रहे हैं. और आप मास्टर्स में जब जाएंगे तो MSW रिवाइज्ड प्रोग्राम जो है उसमें करेंगे, आप जाएंगे आगे तो आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे और प्रोग्राम उसमें प्रोग्राम गाइड आपको दिखेगा उसका लिंक. तो प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ें, because unless and until you understand the entire program right from the beginning,
वो आप क्या होता है कि शुरू में स्टूडेंट्स बहुत इंथुजियास्टिकली एडमिशन लेते हैं, पर बिकॉज दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग जैसा कन्वेंशनल में होगा वैसे ही यहाँ भी क्लासेस होंगे, यहाँ भी हम रेगुलर ये लेक्चर्स हमारे लिए ऑर्गेनाइज होंगे, और फिर वो थोड़े थोड़े दिनों बाद जब ये नहीं हो पाता, उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाते, तो उन्हें थोड़ी सी सेटबैक वो फील करते हैं या नहीं समझ पाते। और इवन जो इस प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोग्राम गाइड ज़रूर पढ़ें। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो वो मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको लिंक भेज दूंगी। तो नाउ लेट मी ब्रीफली टेल यू अबाउट दिस एमएसडब्ल्यू प्रोग्राम। एक मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, वो प्रेजेंटेशन आप देखें। उसके बाद जो भी आपके सवाल मन में आ रहे हैं, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. वी विल टेक इट एट द एंड ऑफ द सेशन, so that once you first understand the entire program, and then I'll be there to take all your questions. Is it fine? So let me just share with you my screen. डरा दिया आपने मुझे, सही में डरा दिया। Are you able to see my screen? No, ma'am, it is not visible yet. It is not visible yet. Okay, just a sec. Just a sec. I'm trying. Is it now visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So I would be talking about this program specifically, and later I think Dr. Rao would also join us in talking about the program and the other administrative part of it, the submissions, the assignments and all. So first try and understand this program, and then we will navigate further. Now, since you've taken admission in School of Social Work, I would want you to know about a little bit about the history of School of Social Work. It was established in the year 2008. So almost we have covered 12 years of this journey. And it aims at providing basically education in many areas of social work. There are various programs offered in HIV/AIDS, counseling,
Then there are programs in tribal studies. Also, there's a BSW program. We'll be talking about the programs also a little later in this presentation. And so from certificate degrees till MPhil and PhD, we are offering programs from the school. So only we started with around 5,738 students, but now we have more than 50,000 students enrolled with us in the year 2020. When we look back and see that in these years we have had a tremendous increase in the enrollment of students, which tells us how popular this program is. And we've spread through the entire country. So we have around 67 regional centers, including the regional centers in army centers. So our program is offered to jail inmates, even in tribal areas. So almost we have grown tremendously, and we are proud about it. And you, as a student of MSW, should be proud about yourself as well. As far as the faculty at the headquarters are concerned, we are six of us. Professor Gracious Thomas, then Professor Rose Nembiakim is the director of the school presently, myself, Dr. Shantini Guin, then Dr. G. Mahesh, and Dr. N. Ramya. And all these faculty are coordinating different programs, which I'll be talking about in the next slide. And also, you should understand that IGNOU is a three-tier system, basically. We have headquarters located in Delhi, and from where all the schools are located and from where all the programs are launched and offered. And then we have the regional support centers, regional centers, which we call all spread across all over the country, where you have, where now this program is being conducted from is a regional center. And all the programs are offered from regional centers that way. The implementation part of it is done by regional centers. And for all your issues, you would be approaching regional center. Only when it comes to any academic related problem, you approach the headquarters. And then you have study centers where your academic counseling sessions will be held, where you would be going to submit your assignments and for supervision of fieldwork. All that would take place at the study center. And study center is the nearest place which is located to your home. Now, there are various programs which are on offer, PhD, MPhil, then MSW, MSW counseling. We have BSW, then PG diploma in counseling. Then we have certificate program in criminal justice system, CAFE and DAFE, which are in HIV and family life education, and diploma in HIV AIDS and family life education, and also a certificate program in tribal studies. And these are the program coordinators on the right-hand side, you can see. So they are the ones who have developed the programs and are coordinating presently. Now, a little bit also you should know why social work education was thought about offering through ODL. Because as you can understand, if you have taken a conscious decision of taking admission in this program, you would be well aware that this program involves fieldwork. And fieldwork is basically, it requires hand-holding, it requires, gaining various skills of working with people. So all the conventional university initially opposed this idea that why should social work program be offered through ODL? Because this is a very, very, intensive program which requires fieldwork, which requires imparting of skills. So how will the students learn those skills? So a lot of research was carried out, and it was seen throughout the country that there is a need to provide an in-service educational opportunity to so many people who are already working. I'm sure many of you would be working in social and welfare service sectors, and who would want to pursue their higher education in social work, or who would work, for their promotion, it would be required. So such kind of results came out from the country, and that is why we started offering, and we developed a mechanism wherein those skills are still imparted, the fieldwork is still carried out, and it is beautifully now, spread throughout the country. And we have got so much of acclaims throughout the country. We've got so much of appreciation.
because students after passing out from here are not only pursuing higher education, they're also employed outside, they are employed within the country, and so there's a lot of job also which is available to students after doing MSW. So it has reached almost every state of India now. Even where there were no conventional universities which was offering MSW, there also IGNOU is there, and students can access this higher education degree from any part of the country in India, be it Northeast or be it Andamans, be it as far as Kashmir to Kerala, whatever, any part you can name, and there we are there. So we are able to train and retain the social workers at grassroots level because students can learn in their own local environment. For example, if you are well versed in Marathi, say, and if you come to Delhi here, you might not get the clientele who can speak or understand Marathi. But if you're working there if you're doing field work there in Maharashtra, you will feel that the people are very well versed with the language, and you can, as a field worker, can work very smoothly. Whereas the same could not be possible in, say, Delhi or any other part of the country. So it is very, very advantageous even to the learners to learn in their own local environment. Also, this program has been able to address the shortage of trained professionals because, especially in rural areas or urban areas, even tribal areas, um, so much so in the union territories. So, everywhere now there is an institution for offering this program, and the trained professionals, after doing MSW, are able to work in on the development sector in those areas. IGNOU is known for reaching out to the last person also and reaching the unreached, we say. And so, in terms of access and equity, we have reached in not only in rural areas but also tribal areas. We've reached to women, particularly targeting the disadvantaged sections of the society. There is no age barrier or any marital status. There are it's a very flexible system, and there are hardly any barriers if one is really interested to study. It is more affordable. So this was a general background I wanted to give you about, first of all, little about IGNOU and more about the MSW program, why we started offering and how the history has been, a little bit peek into that. And now coming to the MSW program, the revised program, which was offered from January 2019, we have total number of credits as 72. And eligibility is the bachelor's degree from a recognized university. Medium of instruction is English and Hindi. Some of you would have chosen English medium, some would have chosen Hindi medium. So the resources, the learning material is available in both the languages. The exam is also conducted in both the languages. Duration is minimum 2 years and a maximum 4 years, which has been revised from this year. Earlier it was maximum of 5 years. Now all the master's program are now maximum duration is 4 years. It is offered both in January and July cycle of admissions. And the fee structure, you know that it is 36,000 for full program, and yearly it is paid as 18,000. Now, coming to the program details, in the first year, there are 3 compulsory courses which you would have taken. That is, first is MSW 001, which is Origin and Development of Social Work. And this is a 4-credit program. Now, second is MSW 002, which is Professional Social Work and Indian Perspectives. This is also a 4-credit course. The third compulsory course is MSW 005, which is Social Work, Practicum and Supervision. This is a very unique paper because it gives you a theoretical perspective of what is social work practicum, what is field work, and what are the various ways of supervision. Because you are also doing your field work side by side, which is a practical part, which I will be just discussing. And you are also reading about it in theoretical perspective about it.
So later, if you are planning to go into academics or if you are planning to pursue MSW further, you will be able to understand the entire nuances regarding social work, practicum, and supervision. Now we have elective courses in which you would have chosen any two of the elective courses. MSW 003, which talks about basic social science concepts. MSW 004, which is on social work and social development. Then MSW 006, which is social work research. MSW E10, which is social work in African context. So anybody who wants to later work in any of the African countries, specifically if you want to work in Ethiopia, you can take this course. MSW 032 is social work and criminal justice. So you can see a variety of elective courses are offered, and you can choose any of these two as per your interest. You would have chosen already. So I'm sure you would have chosen as per your interest. And fieldwork is a compulsory part. There are two fieldwork components in the first year, MSW L13, which is social work practicum 1, and MSW L14, which is a block placement in the first year. And these fieldwork are of 8 credits. Otherwise, the theoretical courses are of 4 credits each. So you can understand that 12 plus 8, 20 plus 16, 36 credits you have to complete in first year. And similarly, 36 credits in the second year in order to qualify for the master's degree. I will be talking about the fieldwork components later in this presentation. Now, coming to the second year, which you will be taking, doing your re-registration after a year, say next year, June 2021. That time, so you should be aware how you can go about choosing the courses. There are 4 compulsory courses, MSW 007, which is casework and counseling, working with individuals. This is one of the methods of social work. There are 6 methods of social work. You will be studying during the theoretical classes and when you are doing your self-study. Casework, group work, community organization, then social action, social welfare administration, and social work research. So these are the 6 methods of social work, and you get to know all about them in the second year. MSW 8 is social group work. MSW 9 is community organization management for community development, and MSW 17 is contemporary methods and values of social work. So in MSW 17 is a new course which are offered, in which there are a lot of contemporary methods and values of social work which are being talked about. In the elective courses, you can choose any one. Unlike in the first year, where you had to choose 2 electives, here you have to choose any one elective. And the electives are, first is MSW E001, which is HIV/AIDS, stigma, discrimination, and prevention. This course is useful if you want to understand HIV/AIDS and all regarding HIV/AIDS management also. MSW E002 is women and child development. Then MSW E007 is international social work. Anybody who's wishing to later work in any of the international locations, you can pursue this course. MSW E003 is disaster management. And MSW P001 is dissertation, which is a project work, basically a research dissertation. So if you are interested in research, if you have taken MSW 006 in the first year, then you can opt for MSW P001 dissertation project work. If you are planning to later go into the area of research, or if you want to pursue your MPhil, PhD, then you should go for dissertation. Otherwise, you can choose any one of the theoretical courses in the electives. Now, there are 2, again, fieldwork courses which are compulsory. First is MSW L15. This is Social Work Practicum 2. And MSW L16 is internship. So again, you get 36 credits to choose and complete. And so you make up your 72 credits in 2 years' time.
Now, why do we do fieldwork? That question is very important. A lot of students, what they do is they complete the theoretical courses, but they are stuck with the fieldwork. Either they are employed, or they somehow find difficult to complete their fieldwork. Why? Because right in the beginning, they do not plan. When you take admission, first of all, I am sure you would have taken a conscious decision of understanding that this program is different from any other master's program because it involves a lot of fieldwork. And fieldwork has to be planned in such a way that you are able to complete your first year fieldwork in first year and second year fieldwork in the second year. And as I just shared with you that there are two fieldwork courses in the first year, MSW L13, which is a concurrent fieldwork, and MSW L14, which is block placement. This is in the first year, and MSW L15 and L16 are in the second year. So you gain the practical experience of the classroom, whatever you've been learning, what the methods, the various skills, the philosophy of social work, all that which you are learning about working with people, you get those experience in by working in the field with clients or communities. Now coming to MSW L13 and MSW L15, both of these are concurrent fieldwork. Why do we say concurrent fieldwork? Because it can be done spread throughout the year. You can do twice a week. If you are working, you have less time, you can do twice a week, you can do thrice a week. You can spread it throughout the year. And fieldwork you have to do only under supervision of a approved fieldwork supervisor. There are two documents which are important here. I would just digress a little. There are two very important documents which you must read after going back from today's session, wherever you are located. If you are listening from your home, then you must, after listening to this session, after the session is completed, you can go to eGyan Kosh and read two documents. One is program guide and second is MSW L13 block 1, which is a fieldwork manual. Because if you read it in the beginning, how you have to go about fieldwork, what you are expected to do, how you should choose your placement, everything is given in detail there. And if you are aware about it right in the beginning, I'm sure you can complete your MSW program smoothly without any hurdles. So please do that today, because if you put it for tomorrow, you will forget it and then it will be just, put under the carpet. So do it today itself. In MSW 13, you are required, I was talking about even supervision. So what you need to understand is that fieldwork has to be done under supervision of fieldwork supervisor. Fieldwork supervisor is provided to you at the study center by the study center coordinator. He or she will take out a list wherein every fieldwork supervisor is allotted, say, 10 students, and that list is put up in the notice board on the studies in the study center. And then you can meet your fieldwork supervisor and you can discuss your fieldwork, where you want to work. If you have chosen your organization, you can discuss that. If not, you can ask your supervisor to help you in choosing a NGO or any other, say, a hospital setting if you want to work in a hospital, or a school setting if you want to work as a school social worker. So whatever is your area of interest, you can work in an open community, you can work in a slum, you can work in an NGO, you can work in an outreach program of NGO. So anything which is of interest to you, wherein you will get an exposure of practicing all the methods, of practicing all these skills, you can choose that, discuss with your supervisor, and you need to put in 45 concurrent fieldwork visits there. Write reports of that. We have fieldwork journals, MSW L13, L14, L15, and L16. There are 4 fieldwork journals. So first, when you're going to the fieldwork, write those, your field notes in a diary, which you will carry. And later on, make a fair copy of that and put it in the fieldwork journal. Get your, like every ninth, after doing every ninth fieldwork, you have to meet your fieldwork supervisor. And that is called individual conference. Individual conferences wherein you meet your fieldwork supervisor and discuss one-to-one all the issues which are related to fieldwork.
It could be, say, your dilemma, your difficulties, or it could be your success story. It could be your challenges in going to the field, or challenges which you are facing while visiting a NGO. It could be related to challenges you are facing in writing the report. So anything and everything related to fieldwork needs to be discussed and as well as written in the report. There are, sheets in the fieldwork journal which is marked for writing reports of individual conferences, and you can write report of that. And I just want to take a little break and ask you, is it fine if I go in English or should I speak in Hindi? Sorry, I did not ask in the beginning. Ma'am, use both. यूज बोथ, ओके ओके। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि ये आप जो 45 कॉन्करेंट फील्ड विजिट्स है, इसके भी रिपोर्ट्स आपको फील्ड वर्क जर्नल में लिखने हैं, और आपके जो आईसीज हैं, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, उसके भी रिपोर्ट्स आपको उसी जर्नल में बने हुए हैं। वहाँ पे आपके पास हर 9th फील्ड वर्क विजिट के बाद एक शीट लगाया हुआ है जहाँ पे आपको आईसी के रिपोर्ट्स लिखने हैं। उसी तरह ग्रुप कॉन्फ्रेंस होता है। ग्रुप कॉन्फ्रेंस इज व्हेन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि एक स्टडी सेंटर में मान लीजिए 5 या 6 आपके MSW स्टूडेंट्स हैं, वो एक साथ मिलके उस सुपरवाइजर के अंडर जितने भी MSW स्टूडेंट्स हैं वो मिलके आप लोग एक मीटिंग करेंगे जहाँ पे आप अपना फील्ड वर्क प्रेजेंट करेंगे कि आप फील्ड में क्या कर रहे हैं, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या आपकी क्या सक्सेस स्टोरी है, आपने क्या नया किया वहाँ पे और क्या आप शेयर करना चाहते हैं ग्रुप के साथ। तो उसमें सारे लोगों का एक रोल होता है, एक चेयरपर्सन होता है, एक रिकॉर्डर होता है, एक प्रेजेंटर होता है। इस तरह से आप लोग अलग अलग रोल निभाते हैं और वो ग्रुप की मिनट्स लिखी जाती है वो ग्रुप कॉन्फ्रेंस की, और ये सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं आपके फील्ड वर्क मैनुअल में। तो आप ज़रूर पढ़ें टू अंडरस्टैंड ईच प्रोसेस, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, आप सही से नहीं करेंगे, और सही से जब नहीं करते तो क्या होता है, फील्ड वर्क जर्नल जब एक्सटर्नल इवैल्यूएटर के पास जाता है तो वहाँ से वापस कर दी जाती है और स्टूडेंट्स का अननेसेसरी टाइम लॉस होता है। तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसेस राइट इन द बिगिनिंग। तो 5 ओरिएंटेशन विजिट्स होते हैं सबसे पहले, और ये विजिट्स जो है बेसिकली जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ओरिएंटेशन मतलब आप 5 ऐसे अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं, अलग अलग सेटिंग में जाते हैं, जहाँ पे आप उनकी सेटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। आप उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं और वो सारी कुछ एक्सप्लेन की गई है फील्ड वर्क मैनुअल में, और जर्नल में भी एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि किस तरह के आप सवाल करेंगे। ऐसे सवाल जो कि थ्रेटेंड उनको ना फील कराएं, मतलब उनको अनकंफर्टेबल ना करें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन आपको एक जानकारी मिल जाए उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किस तरह का वहाँ का स्टाफिंग पैटर्न है, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरह का उनका एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फंडिंग है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, वो आप उनको जैसा जो आपको उचित लगे वो सारे फॉर्मेट के हिसाब से आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप रिपोर्ट लिखेंगे। इन 5 ओरिएंटेशन विजिट्स के दौरान ही यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन चुन लेते हैं जिसमें वो आगे के 45 कॉन्करेंट फील्ड विजिट्स करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक आप हॉस्पिटल गए, सेटिंग में गए, एक आप स्कूल चले गए, एक आप मीडिया सेंटर चले गए, एक एनजीओ चले गए, एक विमेन एंड चिल्ड्रन के साथ काम करने वाले एनजीओ में चले गए, किसी से एडल्ट्स के साथ काम करने वाले संस्था में चले गए। तो अलग अलग सेटिंग में आप जाकर देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है और आप उसको चुन सकते हैं अपने आगे के कॉन्करेंट फील्ड विजिट्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जो ये 45 दिन का कॉन्करेंट फील्ड वर्क विजिट है वो एक ही संस्था में होगा, उसमें अलग अलग 45 नहीं करना आपको, ठीक है। 45 दिन आप एक ही संस्था में करेंगे। एक संस्था में कोई काम आपको चाहे तो एजेंसी डेजिग्नेट करेगा या आप खुद भी चुन सकते हैं, जैसा डिस्कस करके वहां पे, जिसमें आप एक काम की शुरुआत करेंगे और उसको एंड तक पहुंचाएंगे, और इस पूरे प्रोसेस में आपकी जो लर्निंग है, जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन है, आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं फील्ड वर्क रिपोर्ट के लिए। फील्ड वर्क रिपोर्ट का भी एक फॉर्मेट है जो दिया हुआ है आपके जर्नल में, उस फॉर्मेट को फॉलो करके आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, जिसमें बेसिकली आपको क्या सीखना है कि आपने उस दिन क्या प्लान किया, क्या काम किया,
क्या आपके ऑब्जर्वेशन एनालिसिस रहे, उसके बाद आपने क्या स्किल्स सीखा, क्या मेथड्स यूज किया सोशल वर्क के, और क्या आप अगले दिन का प्लान करते हैं। इस तरह से आप अपना रिपोर्ट लिखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी भी संस्था को चुन सकते हैं, सोशल वेलफेयर एजेंसीज जैसे कि ओपन कम्युनिटी, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, डिसेबिलिटी का सेक्टर हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, एडुकेशन हो सकता है, करेक्शनल सेटिंग हो सकता है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स पहले परमिशन लेके जेल में भी उन्होंने काम किया है क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे करेक्शनल सेटिंग में। ऑब्जर्वेशन होम जैसे होते हैं, नारी निकेतन, इन संस्थाओं में भी लोगों ने काम किया है। लेकिन उसके लिए काफ़ी परमिशन लेना पड़ता है और वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपके। देन जैसा कि मैंने बताया कि एक ही संस्था में आपको करना है ये 45 दिन। ऑल्सो यू नीड टू मीट योर फील्ड वर्क सुपरवाइजर एंड डिस्कस द प्लान फॉर कॉन्करेंट विजिट्स। ये बहुत ज़रूरी है। सुपरवाइजर से आप ज़रूर मिलते रहें, टच में रहें। आपका प्रोग्राम 2 साल के अंदर ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। जब आप सुपरवाइजर से नहीं मिलते हैं तो क्या होता है कि वो 2 साल के बदले 4 साल हो जाता है, क्योंकि आपका फील्ड वर्क रह जाता है, थियरी पेपर्स आप क्लियर कर लेते हैं। जो भी आपकी मीटिंग्स है बिटवीन यू एंड योर सुपरवाइजर, एज आई एक्सप्लेन टू यू रिगार्डिंग इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस, सो डू दैट। देन 5 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस मिनिमम है जो आपको करना है, विच इज मैंडेटरी, और ये एवरी 9th फील्ड विजिट के बाद होता है। Then MSW L14 is block placement. It should be done in one organization, इंस्टीट्यूट और सोशल वेलफेयर एजेंसी, और ये 1 महीने का काम होता है जो कि मैंडेटरी है। और ये जो है ये कंटिन्यूअस 1 मंथ है ब्लॉक प्लेसमेंट, अनलाइक कॉन्करेंट फील्ड विजिट जो कि आप रुक रुक के भी कर सकते हैं, बट ये आपको एक साथ 1 महीने काम करना है। ये इसके लिए भी आपको फील्ड वर्क सुपरवाइजर के गाइडेंस में ही करना है। इसके लिए अलग जर्नल है MSW L14 जो कि ब्लॉक प्लेसमेंट रिपोर्ट लिखने के लिए बनाई गई है। आप फील्ड वर्क मैनुअल में भी इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। इसमें जो आपको करना है वो जैसा कि मैंने बताया इस सेशन के दौरान कि देर आर 6 मेथड्स ऑफ सोशल वर्क: केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, देन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एक्शन एंड सोशल वर्क रिसर्च। इसमें से आपको कोई भी 2 मेथड को प्रैक्टिस करना है। यू कैन चूज एनी ऑफ दीज 2 मेथड्स, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप जिसके बारे में समझ बनाई है आपने पढ़ने के दौरान और आपको अच्छा लगता है वो मेथड, वो आप चुन सकते हैं इन डिस्कशन विद योर फील्ड वर्क सुपरवाइजर। देन मैम एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ जी मैम ये MSW L13 का हम्म जो 45 डेज है वो अलग, और MSW L14 का ये 1 मंथ अलग है, ऐसा अलग अलग है या फिर अलग दोनों अलग मिला के 45 अलग है? अलग 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 है। ओके ओके टोटल 75 डेज ऑफ फील्ड वर्क है। ओके मैम। 45 अलग और ये 30 डेज अलग। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है 45 डेज फील्ड वर्क के लिए और ब्लॉक प्लेसमेंट के लिए, क्या वो दोनों एक ही है या अलग अलग करनी? नहीं नहीं अलग अलग है। आप 45 अलग डेज अलग। अलग ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, 30 डेज अलग ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। और इसमें जो रिपोर्ट है जो आप फील्ड वर्क का लिखेंगे वो तो लिखेंगे ही, उसके अलावा आप एक डिटेल रिपोर्ट लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का भी, जिसको हम कहते हैं एजेंसी प्रोफाइल, वेयर द स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। जो भी एनजीओ में आप प्लेस्ड रहेंगे उसके बारे में एक एजेंसी प्रोफाइल बनाएंगे। और ये भी एजेंसी प्रोफाइल कैसे बनाना है ये एक्सप्लेन किया हुआ है फील्ड वर्क मैनुअल में, और जिसका फॉर्मेट है वो भी दिया हुआ है आपके जर्नल में एज वेल एज फील्ड वर्क मैनुअल में। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी मैम जैसे आपने बताया कि फॉर द concurrent field work the agency or the organization can be chosen by us, yes you can choose, yes but for the block placement can we choose the organization also? yes you can choose. See, there is no problem in choosing an organization. Only thing is there are 2 concerns in here. One concern, the organization should be reputed, renowned, and there are all kind of organizations, so it should be doing good work. It's authentic and it should be doing good work, because
आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और जहाँ पे आपका लोकेशन है, वाई दिस फ्रीडम इज गिवन टू यू, क्योंकि आप हो सकता है जहाँ लोकेटेड हैं उसके पास वो ऑर्गेनाइजेशन हो और आपके इंटरेस्ट एरिया में काम करती हो, तो आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। लेटर इशू करते हैं सुपरवाइजर, वो लेटर भी उनको उनका फॉर्मेट प्रोग्राम गाइड में भी दिया हुआ है, अटैच किया हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल विद द स्टडी सेंटर्स, सो दे विल इश्यू यू a letter wherein you can take that letter and do your field placement. मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बताइए। हाँ, हमें जो ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है वो स्टडी से हमें उसकी जानकारी कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है या उसकी कुछ लिस्ट वगैरह वहीं से मिलेगी क्या? देखिए, आपके सुपरवाइजर्स जनरली उनके पास होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के डिटेल्स, क्योंकि वो हर साल स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं उनके अंडर और वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसलिए उनके पास होती है। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बता सकते हैं कि मैं इस एरिया में काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और वो आपको हेल्प कर सकते हैं उस फाइंड आउट करने में। मैडम हेलो मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन था। अगर मैम स्टडी मटेरियल के लिए हमने अगर सॉफ्ट कॉपी चूज किया हो तो L13 और 14 का जो जनरल है वो कहाँ से भरे, हम कहाँ से लिखे? देखिए, ई ज्ञान कोश पे आप जब जाएंगे तो वहाँ सारी जर्नल्स अपलोडेड हैं, ठीक है, और वहाँ से आपको वो प्रिंट आउट लेना पड़ेगा डाउनलोड करके, उसको बाइंड करा के उसमें रिपोर्ट लिखनी होगी। Okay. Madam, I have a question, ma'am. Yes. If a particular person is a member of any organization, can they choose that organization for the field work? Only one field work. Like अगर आपने MSW L13, L14, L15 और L16 में से कोई एक फील्ड वर्क आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, अगर आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। The rest three has to be done in different organizations. Madam, I just want to ask you one question. Yes, please go ahead. Hello. Yes, please go ahead. मैडम, ये जो अभी आप बोल रहे हैं इसमें सुपरवाइजर विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वर्क एंड समथिंग लाइक दैट? Yes, definitely. They will give their reference. मतलब sometimes it's happen कि if we are approaching to some NGOs or if they are not interested to take us, so in that case, are they helping us for these supervisors? Yes, that is one last point. If you see, इसीलिए I requested in case if you can jot down your queries and you can ask me at the end of the session, because I will be talking about each of these queries which you're asking in the presentation also. Okay. So yeah. Sorry. No problem. You can, in case if you feel that urge to ask, you can ask me, or you can just note it down, because it is very important. This induction meeting is very important in order to answer all your questions. Right. अगर आप अभी पूछ लेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी. Right. So, as I was saying, the fieldwork supervisor, जो आपका क्वेश्चन था वो इस लास्ट पॉइंट में आता है कि they will facilitate you in finding an agency, seeking necessary permission, issuing necessary letters, and finally forwarding the record duly signed to Registrar, Student Evaluation Division, IGNOU मैदानगढ़ी. अभी थोड़ा चेंज हुआ है इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया में इन द फील्ड वर्क जर्नल्स. पहले सुपरवाइजर मार्क्स आपको देते थे और फिर वो जर्नल वहाँ स्टडी सेंटर से डिस्पैच होता था, ये जो रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन है. अभी वो फीडबैक देंगे, आप अपना जर्नल कंप्लीट करने के बाद साइन कराकर रीजनल सेंटर में सबमिट करेंगे. तो दैट आई थिंक डॉक्टर राव वुड स्पीक अबाउट मोर इन डिटेल रिगार्डिंग सबमिशन एंड ऑल. तो ये आप क्वेश्चन उनसे ज़्यादा बाद में बेहतर पूछ सकते हैं. बट अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सुपरवाइजर विल हेल्प यू इन डूइंग ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स. और आप हमेशा सुपरवाइजर से यू शुड फील फ्री टू डिस्कस एनी ऑफ द चैलेंजेस व्हिच यू आर फेसिंग इन गेटिंग योर फील्ड वर्क इन ऑर्डर और चूजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. Now coming to MSW L16, क्योंकि L13 और L15 तो more or less same है, इसलिए हम L14 की बात हमने अभी बताई और 16 पे हम आते हैं कि internship should be done in one organization for 1 month. ये भी mandatory है under supervision of fieldwork supervisor. The organization or agency chosen by you should be other than the ones where learner has completed his or her first and second year fieldwork and block placement. मतलब जो 4 फील्ड वर्क आपके हैं MSW L13, 14, 15, 16, ये हर में आप एक संस्था चुनेंगे, एक अलग संस्था. L13 के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, L14 के लिए एक
L15 के लिए एक और L16 के लिए एक, ठीक है। द एक्टिविटीज जो इसमें इस L16 में करना है आपको, वो है एजेंसी प्रोफाइल बनाना है, कम्युनिटी प्रोफाइल बनाना है, हाउस होल्ड सर्वे करना है। ये तीनों चीजें आपके फील्ड वर्क मैनुअल में थ्रेडवेयर एक्सप्लेन किया गया है बहुत डिटेल में, कि कैसे एजेंसी प्रोफाइल बनाएंगे, कम्युनिटी प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे, उसको रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, इवन हाउस होल्ड सर्वे कैसे करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें रहेगा, ये सारी डिटेल्स एक्सप्लेन की गई है फील्ड वर्क मैनुअल में, और आई वुड अर्ज यू अगेन दैट यू मस्ट रीड इट। सो ये जो 4 फील्ड वर्क कोर्सेज हैं, इससे आपको 1200 प्रैक्टिस आवर्स मिलता है ओवर द 2 years पीरियड। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स हु आर गोइंग अब्रॉड। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ये यूके जाते हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, तो वहाँ की जो काउंसिल्स होते हैं, सोशल वर्क काउंसिल्स हैं जो कि उनको सर्टिफाई करते हैं। In order to practice as a social worker, you need to get the certification from the council. So they approach us for, उनका जो डॉक्यूमेंट ट्रांसक्रिप्ट के साथ एक डॉक्यूमेंट यहाँ से वेरीफाई होके जाता है, उसमें ये रिक्वायरमेंट जरूरी है कि 1200 आपने 1200 आवर्स ऑफ फील्ड वर्क किया है, तो वी आर मीटिंग दैट स्टैंडर्ड। Or then if the student does the 2-year field work, he or she qualifies to work anywhere around the world. And because this is the international standard, students ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत students ये सवाल करते हैं, और मेरे पास नहीं भी तो मैं रोज ही 100 मेल्स आई आंसर ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड उसमें से 10 से 15 मेल इस पे ज़रूर होता है कि कैन वी प्रोसीड टू दी सेकेंड ईयर, और कैन वी सबमिट ऑल दी फील्ड वर्क जर्नल्स टुगेदर। So please do not do it. I request all of you to go one step, at a time. क्योंकि ये एक क्यों डिज़ाइन किया गया है, बहुत साइंटिफिकली आपके कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं, बहुत इसमें एक्सपर्ट कमिटी रहती है ऑल ओवर इंडिया से, इस पे काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और तब ये आपका कोर्स डिज़ाइन किया जाता है। तो इसीलिए ये फर्स्ट ईयर स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के लिए है कि आपने फर्स्ट ईयर का पहले कॉन्करेंट फील्ड वर्क किया, फिर आप जाएंगे ब्लॉक प्लेसमेंट के लिए, फिर आप सेकेंड ईयर का फील्ड वर्क करेंगे, और फिर आप जाएंगे इंटर्नशिप के लिए। तो प्लीज डू इट वन बाय वन, डू नॉट कीप एक्यूमुलेटिंग, और चारों जर्नल आप एक साथ जमा नहीं कर सकते, इट विल बी रिजेक्टेड। सो ओनली प्रोसीड टू द सेकेंड ईयर इफ यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट ईयर फील्ड वर्क। नाउ ये मैंने सोचा इसलिए ऐड करूं अपने प्रेजेंटेशन में, क्योंकि कितनी बार होता है कि जब आप नए होते हैं आपको लगता है कि मैं इस प्रोग्राम से क्या सीखने जा रहा हूं या जा रही हूं, और ऐसे क्या मैं प्रैक्टिस स्किल्स या ऐसे क्या नॉलेज गेन कर लूंगी जो कि डिफरेंट है और प्रोग्राम से। सो लिटिल बिट अबाउट इट, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट एट दिस स्टेज। आप जब ये 2 साल का कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप इन सब चीज़ों को बाद में रिफ्लेक्ट करके सोच सकते हैं कि हैव यू लर्नड ऑल दिस। अभी भी आपने जब डिसीजन लिया होगा, आई एम श्योर आपने सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। ये आपका एटीट्यूड इस प्रोग्राम की तरफ होगा। एंड why it is very important, because it is, as you know, it is a social work program wherein you need the right attitude, because you have to work with the people at the grassroots level, at various levels, starting from grassroots to policy level. So jitne bhi social work ke principles hain, you must abide with that. You must exhibit ethical behavior when you are working, especially with the client. You are going to engage in improving the lives of the poorest of the poor, क्योंकि आप कितने सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कभी कम्युनिटी नहीं गए होंगे, हो सकता है उन्होंने शहर में पढ़ाई की, अर्बन सेटिंग में पढ़ाई की, कॉलेज गए, एंड they've never had an opportunity to go to the community. We get lot of students who've never been to the community, और जब पहली बार वो कम्युनिटी में जाते हैं तो they are completely overwhelmed. उनको they cannot handle the emotions which they feel. So all this, and there is a change in attitude. We have seen that ये 2 साल में जब आपने कोर्स ये बिगिन किया और जब आप खत्म करते हैं तो आप you are a changed person completely, because you get to engage with so many people at every level. Social justice is one thing which you will have to practice, you will have to understand, and you will see it in all arenas of an individual life, a community life. दूसरी चीज है
You will be engaging in research, you'll be using your practical knowledge. अगर आप MSWP लेते हैं इलेक्टिव कोर्स सेकेंड ईयर में, तो आपको एक रिसर्च डिसर्टेशन करने का मौका मिलता है. जो स्टूडेंट रिसर्च में थोड़े वीक हैं और नहीं करना चाहते, दे कैन चूज एनी अदर कोर्स in place of MSWP. You will be practicing evidence informed approaches, जो कि आप जब कम्युनिटी में काम करते हैं और बहुत सारे एविडेंसेस के बेस पे आपने अप्रोच अपना डेवलप किया, वो सीखते हैं आप. लोगों के साथ इंटरैक्ट करना सीखते हैं, इंडिविजुअल्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, फैमिली में, कम्युनिटी में एक रैपो बनाते हैं. और आप पहली बार जब कम्युनिटी में जाते हैं तो कितनी बार आप झिझक होता है, कैसे लोगों से, कैसे अनजान लोगों से मैं बात करूं कम्युनिटी में. मान लीजिए कि आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना है, पर आप जाते हैं तो वहां आपको कोई नहीं जानता, आपको कोई भी क्यों टाइम दे. So you have to build that kind of a rapport, you have to build that kind of a confidence in people by interacting with people. And वो आप जब आप पढ़ेंगे आगे और तो आप जानेंगे कि कैसे आप लोगों के साथ बहुत ही इफेक्टिवली बात करना सीख जाते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं, जो हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. एंड हाउ यू आर एबल टू रीच द गोल. आप क्लाइंट्स को असेस करना सीख जाते हैं. इफ यू आर डूइंग केस वर्क, इफ यू लेटर चूज टू डू प्रैक्टिस केस वर्क एज अ मेथड, यू विल लर्न टू असेस क्लाइंट्स, कैसे उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या issues the clients are facing, and how you can help them come out of it. All that you will be learning in the various courses which are there. Theory में भी पढ़ाया जाएगा, as well as you can practice these in the field work. Then you will learn to also intervene with clients, groups, families, communities. जब आप उनके साथ काम करते हैं तो कैसे कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलता है, वो आप धीरे धीरे ट्रेन होके सीखेंगे. आप इवैल्यूएट करना सीखेंगे, मॉनिटर करना सीखेंगे, जो अलग अलग अप्रोचेस हैं जो इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज के साथ किया जाता है फॉलो. जैसे आप किसी एनजीओ में जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि जब प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट होता है किसी कम्युनिटी में, तो कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है, कैसे असेसमेंट की जाती है क्लाइंट्स की, कैसे वो कोई भी इंटरवेंशन प्लान किया जाता है. So when you are with working, close to these professionals who are intervening in the community, say a psychologist or a counselor or even a doctor, any say a school counselor, any such professionals who are intervening in the community, helping out people to solve their problems, you will learn a lot of these approaches. Then your role as social work would be to promote well-being and advancement of all by effectively engaging in policy analysis. बहुत सारे students को मौका मिलेगा कुछ organization में काम करने के लिए जहाँ पे policies plan की जाती है, researches conduct किए जाते हैं, based on the findings, various policies are planned. तो ये policy analysis कैसे की जाती है, कैसे कोई community के लिए कोई intervention plan किया जाता है, all that you will be learning in these 2 years time. Then how you can organize community, वो भी बहुत ज़रूरी है. जैसे मान लीजिए इवन स्वच्छ भारत अभियान जैसे एक प्रोग्राम है, आप उसमें ही कैसे कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करके एक कम्युनिटी को साफ करने की के लिए उत्साहित करते हैं, encourage करते हैं, और कैसे you take them all together to do their the entire this campaign, they are able to do it in their community. ये भी सोशल वर्कर्स अपने फील्ड वर्क के दौरान करते हैं. या कोई हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना, कोई वुमेन के लिए मान लीजिए जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई सेशन ऑर्गेनाइज करना, या छोटे बच्चों के लिए मान लीजिए उनके एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसा कैंप या कोई सेशन ऑर्गेनाइज करना. सो ऑल दैट हाउ यू आर एबल टू डू, यू विल लर्न इन दीज 2 years टाइम. कुछ ऐसे स्किल्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं टू बी सक्सेसफुल इन दिस प्रोफेशन, विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड while you are doing your field work, is first of all a social worker has to be very observant. उनके analytical skills ये बहुत ज़रूरी हैं. How you see other people's problems objectively is very important. आपकी subjectivity नहीं आनी चाहिए, आपको empathize करना चाहिए problem से, नहीं कि you should show sympathy.
So all that you will learn these skills in the 2 years' time. Then the capacity to take initiative, to work alone and also as a part of a team. Then how you get committed to human rights and social justice. Then being non-judgmental, having a non-judgmental attitude. Then patience in dealing with people, taking up responsibility, being emotionally mature, and sensibly handling different problems and showing sensibility in determining priorities. These are some of these skills which I have listed. There are many skills which you will be learning. You will develop sensitivity. You will know how to effectively and appropriately plan crisis interventions. For example, जैसे earthquake होता है या कोई फ्लड आ जाता है, इन सब क्राइसिस में कैसे इंटरवेंशंस प्लान करते हैं. सोशल वर्कर्स हर जगह होते हैं. इवन इन दिस पैंडेमिक टाइम social workers have come forward to plan different interventions, चाहे वो migrant laborers के issues handle करना हो, उनके लिए फूड ऑर्गेनाइज करना हो, या उनका सेफ ट्रांजैक्ट, उस समय जब ट्रांजिट था सेफली उनको कैसे उनको बस या ट्रेन्स प्रोवाइड की जा रही है, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन. सो ऑल दैट इंटरवेंशंस आर प्लान बाय सोशल वर्कर्स. देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में दे एक्ट एज नेगोशिएटर, मीडिएटर्स, एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग एबिलिटीज. ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप चीज़ों को सीखते हैं तो साथ साथ रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ डीप लर्निंग and it enables you to plan your own approaches and strategies. Now, hello, yeah, sorry to interrupt you, ma'am. But I think somebody else had shared his screen. That is why your presentation has got out. Okay. So if you can please reshare this. Sure. Okay. Is it available now? Is it visible? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. I'll just try. Is it now available? Yes. ma'am. Okay, sure. So now continuing with social work as a career option, when we see, just a sec, I'll have to. Okay. So where all you can get employed after doing your MSW? First of all is you can work in a school. So there is option of school social work. Then you can work in a medical and psychiatric social work. That is another field which is open. Criminology and correctional social work. As I said, in observation homes, then there are jail administrations. So these are also, they have social workers. Then urban and rural community development is another area where you can work. In industrial social work, then career opportunity is there in research organizations. You can be an independent researchers, as well as there are NGO which are they specialize in doing research. Then there is an area of aging and gerontology if you are interested to work with elder population. Then social advocacy is another area where we have social activists working on the issues of people like Medha Patkar and many such people. Disability is another area. Policy and planning, working in order to influence the government on rolling out various policies and in planning various policies.
Then counseling is an area. It could be counseling in school settings, counseling as in various, like say HIV/AIDS clinics, and even in maternity clinics. Many such settings are there where counselings are carried out. Even in for say children, it could be for women, it could be for elderly. So that is another area where you can be employed. Then management and administration of NGOs, that's another area. Now coming to who are the employees of social work professionals. First of all, government departments. There are various government departments who take out advertisements. Screen is not visible. Again, it's not visible. It is मैम किसी ने visible, तो ma'am. फिर से स्क्रीन शेयर किया, किसी ने, मनोज कुमार कोई है, और No, स्क्रीन शेयर everyone. किया। Hello. Yes. If you can press this the list of participants on the right top, जहाँ पे अभी 97 नंबर दिख रहा है, अच्छा, वहाँ पे आपको सौम्या मैम के 2 लॉगिन दिखेंगे, राइट? अच्छा, मैं अभी तो मेरा इंटायर स्क्रीन मेरे इस पे आ रहा है। अभी क्या आपको स्क्रीन आपका दिख रहा है? प्रेजेंटेशन है, हाँ, विजिबल है। अच्छा, आपको सौम्या मैम के 2 लॉगिन दिख गए? रुक जाइए, अभी तो फॉर द पार्टिसिपेंट्स। Wait, let me just check. No, Yes. ma'am, your screen is visible, right? I think because someone has by mistake tried to present something, hence it has on. So ये सौम्या मैम का जो एक और जो दूसरा लॉगिन है, जिसमें प्रेजेंटेशन दिख रहा है नीचे, राइट? अच्छा। प्रेजेंटेशन में राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको। अच्छा। उस डॉट पे क्लिक कीजिए। ओके। और वहां पिन टू स्क्रीन लिखा होगा, फर्स्ट जो ऑप्शन है ना पिन का, उस पे आप प्रेस कीजिए तो मैडम की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी आपको। अभी दिख रही है? नहीं आ रही है। यस मैम। अभी दिख रही है? नहीं दिख रही है। अच्छा, नहीं दिख रही है, फिर से मैं ट्राई करती हूँ। जस्ट अ सेक। Yeah, it is visible now. Okay, just a second. Yeah, visible now. Okay. ठीक है. So I was talking about employees of social work professionals. We have government departments who take out advertisements regularly for hiring social workers in various departments where there is a need. As I shared, the various areas where social workers are employed. So in such areas, wherever it's a government department, they do hire social workers. Then another is NGOs. They are working on various issues and they are the largest employers of social workers. Then funding organizations, both national and international. Educational institutions, at many places, school social worker is important, especially Kerala and many such states have, even Delhi has, every school has a school social worker. I'm sure Mumbai must be also having, school social workers. So school is another area. Sorry, ma'am, screen नहीं दिख रहा है. No, it is there. It is there. Okay. Ma'am, it is visible. Okay. Yeah, it is visible. Okay. Please carry on. दिख रहा है मैडम। अरे सर जी, लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा है इधर। आपको अच्छा सुनिए संतोष सर, आपको फोन पे 92 एंड अदर्स दिखाया ना, 92 एंड अदर्स दिख रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करिए। आप उसके ऊपर क्लिक करके सौम्या मैम का जहाँ पे 2 नाम दिख रहा होगा आपको, बराबर? No, please, just I request you all to please keep your mic muted. देखिए, जिसको दिख रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं दिख रहा है, ये सेशन जो है वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। आप सबको हम ये रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करके भी भेज देंगे, वहां पे आपको ये सारी स्लाइड्स वापस से दिख जाएंगी। तो प्लीज, और मैम बोल रही है, मेरे ख्याल में काफी आराम से मैम बता रही हैं, तो आप लोग सुन के भी काफी सारी चीजें समझ सकते हैं। ओके, आप लोगों से दिख रहा है। ओके, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।
तो हाँ, क्योंकि वो आप अगर सुनेंगे भी, मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि हमारे सब लोग सुन भी पाएं वो सारी चीजें, मान लीजिए जो स्क्रीन नहीं देख पा रहे। सो तो बिजनेस हाउसेज इज अनदर सच एम्प्लॉयर ऑफ सोशल वर्कर्स, जहाँ पे CSR आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बहुत सारे MSWs हायर होते हैं। Then research organizations also hire social workers, media houses, hospitals. They all the major hospitals have counselors and they are social workers. Then mental health institutions, they also hire social workers. So this was basically a brief about I tried to explain all the aspects of social work program still. So very very thank you for patiently listening to me and actively listening to me. Active listening is also a skill of social worker. So you all have already started learning the skills of social worker. You have actively listened to me. This is my mail ID, soumya@ignu.ac.in. In case if any academic doubt persists, you can reach me on this, and then we can you can approach me for any problem, and I will be there. Ma'am, can you show your email ID once again, or can you speak once? Your email ID? It's SAUMYA. Yeah. @ignu.ac.in. Okay, thank you so much. Yeah. So this, yes, yes. मैडम ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बाद में हम लोग देखने के तो कहाँ पर? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं जान पाई, एक बार बताएं फिर से। मैडम आज का जो सेशन था ना मैडम, मुझे फिर से देखने का है, तो कैसा देखने? वो आपको मेल किया जाएगा। वो रीजनल सेंटर आप सबको ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराएंगे। उन्होंने अभी सर ने बताया ना रीजनल सेंटर से कि आपको सबको ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल की जाएगी, कराई जाएगी, आपको मेल कर दिया जाएगा। मैडम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम सॉरी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मैम। आपने मेरे ख्याल में बहुत इलेबोरेटली सारे स्टूडेंट्स को MSW प्रोग्राम के बारे में, स्पेशली फील्ड वर्क, क्योंकि रीजनल सेंटर में स्टूडेंट्स जनरली MSW के जो आते हैं वो फील्ड वर्क के ही डाउट्स लेके आते हैं। मेरे ख्याल में जितने भी डाउट्स हम अक्सर फेस करते हैं वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए हैं। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक डाउट था। हाँ मैम, एक ही डाउट है, ये जो 45 कॉन्करेंट फील्ड वर्क जो रहता है वो कितने घंटे का होना चाहिए? हाँ बताती हूँ, सर को पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए फिर मैं बताती हूँ। जी सर बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। इससे पहले कि हम क्वेरीज लें, सिर्फ 5 मिनट में हम थोड़े और नॉर्मल चीजें जो जैसे कि असाइनमेंट या एग्जामिनेशन है वो हम बस स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दें। बिल्कुल 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 सर, प्लीज प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच मैम। तो सारे स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को भी पता है और नॉर्मल है कि आपने जुलाई 2020 सेशन में MSW में एडमिशन लिया है। आपका ये जो प्रोग्राम है ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है। आपने जुलाई 20 में एडमिशन लिया है, जून 21, जून 22। So minimum duration is for 2 years. That is, by 2022 June, you all will be eligible to complete your MSW degree, and maximum duration is 4 years. तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन में ना जाना पड़े कभी। आप 2 साल में आपका MSW डिग्री अच्छे से कंप्लीट करके, अपना डिग्री कंप्लीट करके अपने मतलब डिग्री कंप्लीट करके इग्नू से बाहर जाएं, पहला चीज। दूसरा चीज ये होगा कैसे, देखिए इग्नू में 2-3 चीजें होती हैं। आप में से कई लोगों को कई सारे डाउट्स होंगे। सबसे पहला डाउट होगा कि कुछ स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन स्टेटस नहीं दिख रहा है वेबसाइट पे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन स्टेटस वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो गया है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एनरोलमेंट नंबर 2005 या 2006 से शुरू हो रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन डिटेल अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। उन सभी स्टूडेंट्स का डिटेल्स जो है वो बाय एंड ऑफ दिस मंथ, ऐसा बताया गया है रीजनल सेंटर को कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ वो सारी डिटेल्स भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज जो आप कई स्टूडेंट्स का क्वेरी है वो है स्टडी मटेरियल के बारे में। देखिए स्टडी मटेरियल, सबसे पहली चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट किया था या हार्ड कॉपी ऑप्ट किया था। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने
सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट किया था उनको किसी भी तरीके का हार्ड मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, ना ही उनको ईमेल के थ्रू कोई मटेरियल आएगा। दे ऑल हैव टू डाउनलोड देयर स्टडी मटेरियल आइदर फ्रॉम egyankosh.ac.in, वो लिंक अभी हम चैट बॉक्स में लिख देंगे, या तो आपको प्ले स्टोर पे जाके इग्नू ई कंटेंट ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से आपको मटेरियल मिल जाएगा। अभी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हार्ड कॉपी के लिए ऑप्ट किया है उन सभी को उनका मटेरियल उनके एड्रेस पर डिलीवर कराया जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा उनके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, पोस्ट से आएगा उनका मटेरियल। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मटेरियल सारे आ चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको 3 या 4 कोर्सेज के मटेरियल या 1 या 2 कोर्सेज के मटेरियल आए होंगे, उनको बाकी मटेरियल आ जाएंगे। और ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी तक कोई मटेरियल नहीं आया होगा। Materials are also under dispatch, and as we have been informed कि by end of this month most of you will be getting your material at your address. Most of you, not all, but most of you all will get your material. तब तक के लिए जब तक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल जाती, आप लोग भी सॉफ्ट कॉपी रेफर कर सकते हैं, और एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट रीडिंग द ब्लॉक्स और यूनिट्स वॉट एवर दे आर इन दी MSW प्रोग्राम। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असाइनमेंट सबमिशन। आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इवैल्यूएशन सिस्टम जो है इग्नू में, जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो है असाइनमेंट सबमिशन और टर्म एंड एग्जामिनेशन। असाइनमेंट्स आपको लिखने हैं सारे थियरी पेपर्स के, जैसे मैम भी अभी बता रही थी, फर्स्ट ईयर में आपको कितने सारे कोर्सेज हैं, 3 कंपलसरी हैं, 2 इलेक्टिव हैं और फिर 2 फील्ड वर्क कंपलसरी हैं। तो वो जो 3 कंपलसरी या और 2 इलेक्टिव हैं, टोटल 5 या 6 थियरी पेपर्स हैं, उन सारे पेपर्स के आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। वो असाइनमेंट कब आपको सबमिट करने हैं? इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 वो असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। आपको अप्रैल 2021 में ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, ताकि आप अपना फर्स्ट ईयर एग्जाम लिख सकें जून 2021 में। आपका जो एग्जामिनेशन है वो होगा जून 2021 में। आपका जो फील्ड वर्क है, सर प्लीज हम ये खत्म कर लें, फिर आप प्लीज क्वेरीज पूछ सकते हैं। श्योर। थैंक यू। आपके जो फील्ड वर्क सबमिशन है वो एज पर डेट जो जनरल होता है वो होता है बाई अप्रैल और मई तक आपको आपका फील्ड वर्क या ब्लॉक प्लेसमेंट जो भी है वो आपको सबमिट करना होता है। ये कुछ चीजें हैं, उसमें हम और डिटेल में आएंगे। चौथी चीज ये है, आपको सेकेंड ईयर का एडमिशन लेना होता है। इग्नू का सिस्टम ये है कि आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन फर्स्ट ईयर का एग्जाम लिखने से पहले लेना होता है। तो आपको सेकेंड ईयर का एडमिशन कब लेना है? इन द मंथ ऑफ अप्रैल अगेन। सो अप्रैल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ फॉर द लर्नर्स ऑफ इग्नू इन MSW प्रोग्राम, दोज हु हैव टेकन एडमिशन इन जुलाई 2020 सेशन। आपको एग्जाम फॉर्म भरना है अप्रैल में, आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं अप्रैल में। असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन ऑनली। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स आर आल्सो अवेलेबल एट दी वेबसाइट में, भी हम स्क्रीन शेयर करके बाद में वो भी चेक कर लेंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है अप्रैल में। आपको आपका फील्ड वर्क और ब्लॉक प्लेसमेंट भी जो हेलो सबमिशन है वो अप्रैल और मई मंथ में ही होता है, लिखना है। आपको बता रही थी कि आपका जो फील्ड वर्क सबमिशन है पहले, क्योंकि आप लोग को शायद आइडिया भी नहीं होगा, लेकिन पहले ये फील्ड वर्क सबमिशन आपको करना होता था आपके स्टडी सेंटर में। उसमें कुछ इंटरनल मार्क्स भी होते थे जो आपका सुपरवाइजर आपको देता था। पर अब आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है, मे बी हम ईमेल से के थ्रू भी आप सभी को इंटीमेट भी करेंगे वो प्रोफॉर्मा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो। आपको पूरा आपका जो, जैसे मैम ने बताया कि गाइड का क्या रोल है, गाइड के साथ बातचीत करके किस तरीके से आपको फील्ड वर्क कंप्लीट करना है, वो सारी चीजें मैम ने ऑलरेडी बता दी है। पर आपको सबमिशन जो करना है आपके फील्ड वर्क का, जर्नल का, वो आपको करना है रीजनल सेंटर में, नॉट एट स्टडी सेंटर। तो रीजनल सेंटर दैट इज एट मुलुंड। आपका स्टडी सेंटर है KJ सुमैया कॉलेज विद्या विहार, आपका रीजनल सेंटर है मुलुंड में। तो वहां पे आपको आपका फील्ड वर्क जर्नल्स जो है वो आपको सबमिट करने हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, और जैसे भी डेट्स होंगी उस हिसाब से आपको वो आके सबमिट करना होगा। एक प्रोफॉर्मा होगा जिसको आपका सुपरवाइजर भरेगा। कुछ चीजें हैं जो उनको फिलअप करके रखनी है, वो उनको हम बता देंगे। वो उस प्रोफॉर्मा के साथ आपको वो फील्ड वर्क जर्नल अटैच करना है और फाइनल पूरा जर्नल लाके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये एक ओवरऑल मेरे ख्याल में मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आपकी एक्टिविटीज होंगी। तो बाय जून 2022 आप लोग को सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। मटेरियल आपके धीरे धीरे आ जाएंगे अगर नहीं आए हैं। और असाइनमेंट सबमिशन में भी मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ
स्टार्ट नाउ, स्टॉप शेयरिंग। हम असाइनमेंट्स, ओके ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल होगी इस समय। देखिए, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे या सिर्फ आप गूगल पे भी टाइप करेंगे इग्नू असाइनमेंट, तो आपको एक लिंक मिलेगी। वो लिंक आपको यहाँ पे लेके आएगी। आपको इस लिंक में MSW मास्टर इन सोशल वर्क का असाइनमेंट सर्च करना है, जहाँ कहीं भी होगा। यहाँ है MSWC, ये रहा MSW। आपको यहाँ पे जाना है। इस लिंक में आपको असाइनमेंट सर्च करने हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी आपका मीडियम है वो मीडियम चूज करना है। इट इज फॉर 2019-20। तो अगर हम पेपर फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर हम क्लिक करते हैं, इट इज फॉर जुलाई 19 एंड जनवरी 2020 सेशन। तो इसका मतलब अभी तक आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं हुआ है लेटेस्ट। इट इज ओनली फॉर जुलाई 19 एंड जनवरी 20 पेपर में लिखा रहेगा कि इट इज फॉर जुलाई 2020 एंड जनवरी 2021। अगर वो लिखा रहेगा, वो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व मतलब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मटेरियल आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आपको असाइनमेंट्स लिखने हैं, जैसे भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनको अपडेट नहीं आता है। सी, मोस्ट ऑफ द अपडेट्स आर बीइंग गिवन ड्यूरिंग द इंडक्शन मीटिंग ओनली। आपका एग्जाम कब होगा, आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन कब लेना है, आपको Hello, एग्जाम फॉर्म कब hello. भरना है। Sir, I can't hear your voice, sir. Hello. ओके, ठीक है मैम, मे बी नाउ इट इज क्लियर। ओके, तो आपका जो रीजनल सेंटर मुंबई का वेबसाइट है, यहाँ पे होम पेज पे ही एक टैब है विच इज ई शिक्षा टैब। एक रीजनल सेंटर की हमारी वेबसाइट है rcmumbai.ignu.ac.in। यहाँ पे एक टैब है ई शिक्षा टैब। जितने भी आपको डिटेल्स चाहिए होंगे, जैसे कि रीजनल सेंटर मुंबई हर फ्राइडे को at 11 AM वी ऑर्गेनाइज ई ग्रीवियंस रिड्रेसल कैंप विच वी कॉल एज ई शिक्षा की बात रीजनल डायरेक्टर के साथ। किसी हर फ्राइडे को वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस ग्रीवियंस रिड्रेसल कैंप वेयर एनी स्टूडेंट कैन विजिट थ्रू गूगल मीट ऐप। दिस इज टोटली ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल कैंप। ऐसा ही गूगल मीट का एक लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, हर शुक्रवार को 11 बजे सुबह आप उस लिंक पे क्लिक करिए, आप वो ग्रीवियंस रिड्रेसल कैंप ज्वाइन करिए। आपको जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप वहां पे आके अपना सारा क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं। डायरेक्टली हमारे रीजनल डायरेक्टर सर भी वहां पर बैठते हैं और आपकी सारी क्वेरीज जो भी है ऑन स्पॉट सॉल्व कर दी जाती है। इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया जो है, जैसे कि अभी हम ये वीडियो जो आज हमारा ये सेशन है, इसका वीडियो हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, उसका आपको लिंक भी दे देंगे, पर आप भी यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे की अगर कोई अपडेट्स है तो आपको वहाँ पे मिलेंगी। फेसबुक पेज है, जिनके पास फेसबुक है वो फॉलो कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो ज्यादा फास्टर होता है आप तक पहुंचने के लिए अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो। उसके अलावा और कई सारे लिंक्स, जैसे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के लिंक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक्स, सारे सबमिशन के लिंक्स। उसके अलावा जितने भी काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं, क्योंकि इस सेशन में भी हमारे जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो ऑनलाइन मोड में ही कराए जा रहे हैं। गूगल मीट है, जूम है, फेसबुक है, जो भी तरीका है ऑनलाइन कराया जा रहा है। दो उसके शेड्यूल हम भेजते हैं स्टूडेंट्स को ईमेल या SMS के थ्रू। कई बार कुछ ईमेल्स बाउंस बैक हो जाते हैं, तो ये एक अच्छी हैबिट हमको बनानी है क्या कि एटलीस्ट वंस इन अ वीक वी शुड विजिट द रीजनल सेंटर वेबसाइट। इफ वी मेक दिस एज अ हैबिट, तो हमें किसी भी तरीके का जो हम बोलते हैं मिस हो जाते हैं अपडेट्स, वो कभी भी मिस नहीं होंगे अगर हम ये ई शिक्षा टैब चेक करते रहें। ई शिक्षा टैब के अलावा नोटिस बोर्ड है जो हमारे वेबसाइट पे यहीं पे मिलेगा। इस नोटिस बोर्ड पे भी सारे अपडेट्स आते हैं। अब जैसे करंट स्टूडेंट्स के लिए, करंट मतलब आप नहीं, आपके पहले की जो बैच है उनके लिए असाइनमेंट सबमिशन डेट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 31 दिसंबर। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसी दिन हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे भी
ये सारे नोटिसेस अपलोड हो जाते हैं। ये सारे नोटिसेस ऑफ कोर्स हमारे मेन वेबसाइट पे भी अपलोड होते हैं और हमारी आरसी की वेबसाइट पर भी अपलोड होते हैं। तो ये एक हमें हैबिट बना लेनी है कि हम आरसी वेबसाइट को एटलीस्ट वंस इन अ वीक वी शुड चेक whether there is any new update, the update is for me or not। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हमको मिलती रहेंगी। ठीक है। और ये जो ई शिक्षा टैब की हम बात कर रहे थे, इसी ई शिक्षा टैब में हमने एक लिस्ट अपलोड की हुई है, लिस्ट ऑफ एकेडमिक काउंसलर्स प्रोग्राम वाइज। एकेडमिक काउंसलर जैसे मैम बता रही थी, सुपरवाइजर जिनको आप बाद में बनाते हैं, या फिर जो आपके टीचर्स हैं। अगर हम रेगुलर कॉलेज में हैं तो आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको आप बोलते हैं, हमारे सिस्टम में मतलब इग्नू में उनको एकेडमिक काउंसलर बोला जाता है। तो वो एकेडमिक काउंसलर्स का लिस्ट प्रोग्राम वाइज लगाया हुआ है, मतलब अपलोड किया हुआ है। उसमें आपको एकेडमिक काउंसलर का नाम, उनका प्रोग्राम, कोर्सेज, उनका ईमेल आईडी और आई थिंक उनका फोन नंबर भी अवेलेबल है। तो जब आपके काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वैसे भी वो आपसे टच में रहते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनको डेफिनेटली ईमेल करके अपने एकेडमिक डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर कर सकते हैं। मैम, कैन वी गो नाउ फॉर क्वेरीज? Yeah, sure, please, sir. Okay, so dear students, I think majority of the things have been cleared by ma'am, and a few other things which are important like assignment submission, exam form submission have also been cleared. Apart from this, अगर इससे हट के कुछ अलग आपको पूछना है जो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप अपना नाम चैट बॉक्स में लिखेंगे। प्लीज डू नॉट अनम्यूट योर माइक इन बिटवीन। अपना माइक आप बीच में अनम्यूट मत करिए। जब आपका नाम लिया जाए आप अपना माइक म्यूट कर अनम्यूट कर लीजिएगा और उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आई थिंक वी कैन स्टार्ट। आप सब लोग अपना नाम लिखना शुरू कर सकते हैं। सो द फर्स्ट नेम इज श्रावंती। Hello, good evening, ma'am. Hello. Good evening. Yeah, please Yeah. ask your questions. I have already completed my first year MSW. Now I'm in second year, but Okay. we didn't had any induction meeting for second year. So for second year journal, I wanted to ask you some questions. Like first year there was a supervisor, but if I want to change my supervisor to get like to get some more experience from other supervisor also, so how can I take the approval of supervisor? This has to be done from the study center. You can speak to the study center coordinator, and because see, the allotment of the supervisor is usually done by the study center coordinator. He or she allots students to each supervisor. So you can meet him or her and seek the help. And it is always better also to have different supervisor in first year and in the second year, Yeah, because exactly. you get to learn More from things from the different supervisor. Yeah. And what about this household survey of internship? Can you just give me a small explanation on this? Yeah, definitely. See, household survey is, as I said during presentation also, it is explained very properly and in detailed manner in the fieldwork manual. If you refer to the fieldwork manual, which is there, MSW L13 Block 1. So there, I have explained in, like, say, even shared the questions, like what kind of questions you have to ask. There are different stakeholders. For example, it is a door-to-door survey of, say, 20 households. Then different stakeholders like ASHA workers. Then you have municipal corporators. You have PHCs if it is there in the area. Depending on the area, if you are in urban area, accordingly you will choose. If it is a rural area, so 5 stakeholders as such. You would be collecting data on different aspects of demography, and all that is explained in the fieldwork manual in detail. So if you refer to that, I'm sure you will understand it. Okay, what should be the hours of doing that survey? See, for entire, as I said, 1200 hours is the total hours. So if you divide 600 hours in the first year and 600 hours in the second year, somebody else was also asking this question. Usually we do fieldwork on a particular day for 6 hours.
Okay, 6 hours. Yeah, and so in a week you are doing, like when you talk about concurrent field visit, you are doing say 12 hours of field work, and you spend 3 hours in report writing and ICs. So 15 hours per week, is that how we count? But you, as if you are working, say in a block placement, if you are doing, or internship you are doing, you would be doing 6 hours of field work every day, and you would be writing reports, say 1.5 hours for each day. So 7.5 hours you are spending each day, and that is the logic how it is calculated. And then you have your ICs for half an hour. So that is how you complete your 8 hours a day. Okay, okay. 8 hours a day. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Next, we will take Kishan. Good evening. Hello, ma'am. My question was that this we have enrolled as informed for the course from July 20, right? Yes. We are already in December now, and we are yet to receive the study material, supervisor name, etc. And we are saying that we have to do 75 days of field work. Won't that be a challenge to complete that 12 months of field work in 6 months? See, in IGNOU, you have all kind of challenges which one has to address. There are learners who take admission in right in July. There are learners who are taking admission till November. So the RC also has this challenge of accommodating all students who are enrolling over a period of time, because we give maximum access to learners who can take admission, and they should be able to access higher education. So that is a mandate which we have to fulfill as per the philosophy of ODL. At the same time, this is a pandemic situation wherein the induction is also being held online, the classes are being held online. Otherwise, in normal circumstances, usually it is done earlier, and you get to go to your study centers. Presently, study centers are closed in most of the areas in India. That is the reason why supervisor is not allotted. Rest, sir, can, if you can answer maybe from RC point of view, how they can access, go to their study center or meet their supervisor. That issue. Yes, definitely, ma'am. So, sir, I think I already told that there is a list of academic counselors. There are about 35 to 40 approved academic counselors for Yeah, I got MSW that. program. Right. The list is already uploaded at the website. What you can do, since your induction has been completed now, till you receive the hard copy, you have at least soft copy. You can start referring or Yes. reading the soft copy of material first thing. Soft copy पढ़ते वक्त, if you have any kind of doubt, academic doubt, you can always send email to one of the academic counselor for clarification of the doubts. Second point, the regional center will surely conduct online counseling sessions, maybe in the month of January, third week or fourth week, we do not know as of now, because the dates have been extended again till 31st December. So anyhow, the sessions will be conducted in the month of January 2021. From there also, you'll get to know more about your field academic counselor. Third thing, you were talking about doing the field work. I think ma'am has already answered it. But another important thing is that, see, it is not that you compulsorily have to complete everything, both the field works before June. मतलब अगर आपने field work complete नहीं भी किया है, still you can give your theory examinations. So what you can do, because this flexibility is being given by the university, what you can do, you can complete all the theory papers, whatever have been allotted to you, and try to complete at least MSW L13, which is 45 days ka, concurrent field work. If it's possible, complete the second one also. Otherwise, complete the second one after June, that is in July and August, you can complete that one also. Fair, I think that will help. Thanks. Yes. Thanks for the update. Okay. Thank you. Okay, I think again I will just request you all कि अगर questions आपके sort out हो जा रहे हैं, so you need not repeat the same question again and again for the other students who will be coming very shortly. Next will be Mrunalini. Yes, I think my answers, questions have got answered by ma'am. So thank you. Okay. Thank you. Then Sophia. Good evening, ma'am.
Good evening. Yes. So, ma'am, regarding the fieldwork supervisor, just like sir mentioned, we will be getting via the website, we need to go in. But still, if, like within how many days now will we be allotted to this particular supervisor, and then how to go about? Should we go there and contact sir or ma'am and get along with the process? Sir, would you like to take this question as what is the process there followed in the study center? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, basically, what is happening, because there are large number of students, more than 200 students are being enrolled in every session, and we have some 40 approved counselors. So, what students are, and not every student starts the field work immediately, even if we will allot. So, what students have to do, if they are ready, if they know that they are going to start the field work, they can approach the academic counselors, as mobile number and other details have also been given at our website. In case they are not getting response, they can always send email to RC Mumbai, and RC will then allot them the guide. First thing. Second thing, as ma'am, there are only 40 to, I think, 35 to 40 academic counselors. In case the guides are not available, because one guide cannot be guide for everybody. So in that situation, the learners have also flexibility to get their own guide. So any person who is MSW with 2 years of field experience can become their guide. Anyhow, if the learners choose their supervisor outside the approved list, they have to send the supervisor's biodata to RC Mumbai, which will be, or they can directly send to ma'am also. And once ma'am approves that the counselor is approved, you can go ahead with that particular guide. So first you can contact the approved counselors from the approved counselors list. Most of the time they will guide you. There is no issues. Generally in MSW, there is no issue. And also they can, if you choose outside, then you can ask, there's a portal also now where they can, through any, they have to first speak to a study center where they would like to be associated with, and then they can apply, they can, upload all their details on the portal, academic counselor portal, and they can apply online as well. So that provision is also. Yes, that link I have, I will just type rst.ignu.ac.in. This is the link for the learners who are taking guide outside the approved list. आपको अपने guide को बोलना है और वो इस पे apply करेंगे. It is just a 6 to 7 step process. उस पे आप online apply करना है and automatically they will get approval. They will get empanelment letter as well. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं अपने guides को. Okay, okay, I think. Yeah, thank you so much. Next will be Nirmal Solanki. Yes, please go ahead, Nirmal. Okay, maybe she's not here now. Then सर सर हाँ हेलो बताइए. हाँ सर मुझे अभी तक बुक्स वगैरह नहीं आए हैं तो क्या करना पड़ेगा अभी. देखिए मैम, मेरे ख्याल में मैंने शुरू में ही बताया कि अगर आपको बुक्स नहीं आए हैं तो आ जाएंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मिल गया है, कई सारे स्टूडेंट्स का डिस्पैच में है फ्रॉम एमपीडीडी एंड फ्रॉम रीजनल सेंटर एज वेल. तो आपका मटेरियल मिल जाएगा मोस्टली बाय एंड ऑफ दिस मंथ, या फिर बहुत होगा तो 10th जनवरी तक भी जा सकता है. तब तक के लिए आप सॉफ्ट कॉपी यूज कर लीजिए. मैं एक बार फिर से वो लिंक आपको दे देता हूँ चैट बॉक्स में. आप ये लिंक यूज कर सकती है, नहीं तो आप अगर आरसी मुंबई को मेल करेंगी तो हम आपको मटेरियल का जो सॉफ्ट कॉपी है, डाउनलोडेड वर्जन, वो भी हम आपको अटैच करके भेज देंगे. जी. ओके, थैंक यू. I don't know, but maybe Parveen Naidu. परवीन नायडू जी. ठीक है. श्री किशन सोलंकी. हाँ जी, मैं MSW के प्रैक्टिकल वर्क के बारे में पूछना चाहता था. जी पूछिए. मैम, हमें जो 4 ऑर्गेनाइजेशन चूज करने होते हैं, क्या उसकी परमिशन आरसी मुंबई से लेनी पड़ती है? देखिए, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन आप जब चूज करेंगे तो 2 तरीका है, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान भी बताया. एक तरीका होता है कि आप खुद से ऑर्गेनाइजेशन चूज करें और उसके बाद आप परमिशन लेटर ले लें अपने सुपरवाइजर से.
यूजुअली स्टडीज आपको सुपरवाइजर वो लेटर आपको देते हैं, स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर उस पर साइन करते हैं। जहाँ पे वो नहीं फैसिलिटी अवेलेबल है तब आप रीजनल सेंटर अप्रोच करें, बट पहला लेवल ऑफ कांटेक्ट आपका स्टडी सेंटर होता है जहाँ से यूजुअली ये लेटर मिल जाता है। और मैडम अगर स्टडी सेंटर या आरसी मुंबई में जाए तो फील्ड वर्क का जो पुराने स्टूडेंट ने जो जमा किया हुआ फील्ड वर्क होगा, क्या वो देखने को मिलेगा हमें? नहीं, वो नहीं मिल सकता, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है ना, जैसे आपके एग्जामिनेशन के पेपर्स होते हैं कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, वैसे ही फील्ड वर्क जर्नल एक बार जब सबमिट हो जाता है तो दैट बिकम्स अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, तो वो आपको देखने के लिए नहीं मिल सकेगा। फील्ड वर्क किया है उसका डेमो अगर हमें देखना हो तो उसके लिए कोई ऑप्शन है? उसके लिए तो ऐसा अभी कोई ऑप्शन नहीं है। हम यूजुअली वर्कशॉप्स जब कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, फील्ड वर्क के लिए अलग अलग रीजनल सेंटर में हम टाइम टू टाइम कंडक्ट करते हैं, उस समय हम स्टूडेंट्स को कुछ सैंपल जरूर दिखाते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस यस, थैंक यू मैम। चंचलेश यादव। मैम मुझे पूछने का था, ये जो सुपरवाइजर है और एकेडमिक काउंसलर है, ये एक ही है या इसमें डिफरेंस है? ये एक ही है। एकेडमिक काउंसलर जो आपको फील्ड वर्क के लिए सुपरवाइज कर, देखिए एकेडमिक काउंसलर दोनों रोल करते हैं। कुछ एकेडमिक काउंसलर सिर्फ क्लासेस लेते हैं, कुछ एकेडमिक काउंसलर क्लासेस भी लेते हैं और फील्ड वर्क के लिए भी सुपरवाइज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने किस किस कोर्स के लिए ऑप्ट किया है, अप्रूवल लिया है। तो अगर उन्होंने अप्रूवल लिया है फील्ड वर्क सुपरवाइज करने के लिए, क्योंकि जब वो अप्लाई करते हैं एज एन एकेडमिक काउंसलर तो वो अपने कोर्सेज उसमें दिखाते हैं कि वो किस कोर्सेज में इंटरेस्टेड है। तो अगर वो फील्ड वर्क अपने कोर्सेज में अप्लाई करते वक्त देते हैं तो वो फील्ड वर्क भी सुपरवाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली दे आर एकेडमिक काउंसलर्स एंड दे आर ऑल्सो फील्ड वर्क सुपरवाइजर्स। तो जब हम एकेडमिक काउंसलर को अप्रोच करेंगे एज पर ये जो है लिस्ट में, तो वो हमें गाइड करेंगे सुपरविजन हाँ करेंगे? बिल्कुल सुपरवाइज करेंगे, उन्हीं की लिस्ट लगाई गई है जो आप फील्ड वर्क सुपरवाइज कर सकते हैं, वही लिस्ट में आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आई थिंक हो गया आपका, तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रियंका मागर। Yes, hello sir. I have a question for you. When we go to इग्नू ई कंटेंट ऐप, वहाँ पे सिलेबस देखने के लिए दो चीज़ें दी है, वन इज़ MSW एंड वन इज़ MSW रिवाइज्ड। तो MSW अगर फर्स्ट ईयर है हम, तो हमें कौन सा वाला सिलेबस गो थ्रू करना चाहिए? मेरे ख्याल में आपका जो कोर्स है MSW रिवाइज्ड, आई गेस मैम इट इज फ्रॉम जनवरी 18 और जुलाई 18 आई थिंक। जनवरी 2019। हाँ 19, ओके। उसके बाद से जितने लोगों ने एडमिशन लिया है वो रिवाइज्ड MSW प्रोग्राम ही देखेंगे। ओके मैम, थैंक यू। मे बी नेक्स्ट विल बी रूपेश। एक बार फिर से आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपके क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं तो प्लीज डू नॉट आस्क, सो दैट जिनका क्वेश्चंस थोड़ा होगा वो हम ले लेंगे। नेक्स्ट विल बी रूपेश। Hello sir, my question, my query has already discussed earlier, so no need to repeat it. Thank you. Okay, thank you sir. Neeta Bansode। Okay, then Aarti Suryavanshi। Aarti Suryavanshi। Okay, then this will be Kanchan। I got the answer, sir. हाँ आरती जी बोलिए आप मैम। ओके ठीक है, कंचन। देन कुणाल सासने। कुणाल सासने। ओके, श्यामल मस्के। श्यामल यस सर। बताइए। श्यामल आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए।
ओके, ठीक है। द नेक्स्ट विल बी शोभा निकम। यस सर, मुझे पूछना था कि आपने जो बोला है फील्ड वर्कर्स के लिए सुपरवाइजर्स की लिस्ट लगाई है, और जो एकेडमिक जो भी बोला था आपने, क्या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो, तो वो जो हाँ है हाँ दोनों भी हमें ही चॉइस करना है, हमें क्या लेना है वो, यानी किसको किसके साथ हमें काम करना है, या जो भी है जनरल लिखना है या स्टडी नहीं करना है, जो भी। नहीं नहीं नहीं, देखिए कैसा है मैम, ऑलरेडी मैम ने भी क्लैरिफाई किया, एकेडमिक काउंसलर जो है वो आपको चूज नहीं करना। एकेडमिक काउंसलर जो आपको पढ़ाते हैं, जो लेक्चर्स लेते हैं, वो हाँ आपके एकेडमिक काउंसलर हैं, तो वो अलग है। वो हम आपको सेशन के लिए मेल करेंगे, आपको अटेंड करना है काउंसलिंग सेशंस। लेकिन जो फील्ड वर्क सुपरवाइजर है, एक लिस्ट है बहुत सारा, तो जो 35-40 है, आप उसमें से एटलीस्ट पहले 1-2 लोगों को भेजिए ईमेल, हाँ कॉपी टू स्टडी सेंटर में रख के। स्टडी सेंटर का ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे भी है, और आपको मेल भी जाएगा आज के बाद कल मेरे ख्याल में। तो ओके आप स्टडी सेंटर को कॉपी रख के आप जो एक सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट करिए टू गाइड यू फॉर फील्ड वर्क, तो वो आपको रिवर्ट करेंगी, ओके आई विल गाइड यू, और उसके बाद आप उनके कांटेक्ट में रह के अपना फील्ड वर्क कंप्लीट कर सकती हैं। ओके, अगर और हम हमें जो सब्जेक्ट ले लाए, यानी वुमेन एंड चाइल्ड, और भी मैडम ने बहुत सारे सब्जेक्ट जो बचाए, वो भी हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं ना, या क्या क्या है, किसमें हमें क्या सीख लेना है, यानी वो सब्जेक्ट जो हमें कौन सा लेना है, उनसे हम पूछ सकते हैं ना उसके बारे में। मैं समझा नहीं मैम, कैसा सब्जेक्ट लेना है? ये आप बोल रहे अभी मैडम ने जो बताए 4-5 जो थे, वुमेन हाँ एंड चाइल्ड था, और भी 2-3 थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ इलेक्टिव्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ 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 राइट। तो उसके बारे में किसमें क्या है, और क्रिमिनल के बारे में थोड़ा कुछ बताया, वुमेन एंड चाइल्ड के बारे में बताया, तो मुझे कौन सा इसमें मुझे सब पढ़ाई करनी है, ये मुझे कहाँ से पूछना हुआ होगा, तो किससे पूछना है मुझे? देखिए वही हमने बताया, आपका एकेडमिक, आपका काउंसलिंग सेशन होगा मैम, लेक्चर जिसको आप बोलते हैं, वो आपका अच्छा लेक्चर कंडक्ट किया जाएगा। देखिए लेकिन एक चीज आप सबको समझने की आवश्यकता है कि ये आप एक रेगुलर कॉलेज में नहीं है, तो आपको इतने एक्सटेंसिव लेक्चर्स या फिर फोर्सफुली बैठा के चीजें समझाना या पूछना, और कोई हाँ, वो फोर्स भी तो नहीं होता है मुझे आपको वही लेक्चर्स सब्जेक्ट कंडक्ट। के बारे में जानकारी है कि हाँ किसमें क्या है, बस तो, बाकी मुझे तो जो करना आपको, है मुझे मालूम है, हाँ लेकिन मुझे आप, जानकारी चाहिए कि किसमें क्या क्या है, वो हाँ मुझे तो कहाँ देखिए से। मैम, आपको एटलीस्ट 10 से 15 दिन पहले काउंसलिंग शेड्यूल बता दिया जाता है कि ओके इस तारीख पे आपका मान लीजिए MSW 1 का क्लास होने वाला है, और इस तारीख पे भी होने वाला है। तो ओके आपको क्या करना है, आपको उस 10 दिन का यूज करना है, और MSW 1 का मटेरियल पढ़ना है, जो आपको ओके इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ज्यादा पढ़ना है, या जो ज्यादा टफ लग रहा है आपको वो पढ़ना है, और फिर उसमें आपको नोट्स बनाने हैं कि आपको ये डाउट्स हैं। तो इसको लेक्चर ना समझ के हम अगर इसको डाउट क्लियरिंग सेशन लेके चलेंगे, तो आपको ये ओके ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको सेशंस के अलावा कभी डाउट आता है, तो आप अपने जो काउंसलर्स हैं उनको आप ईमेल कर सकती हैं अपने डाउट्स की, यहाँ पे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो जितना हो सकेगा उतना आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है मैम। मेरे ख्याल में अश्विनी सोनार जी का हो गया है। मधुरा प्रधान। मेरा बाकी है। अच्छा, अश्विनी। बताइए बताइए। यस सर, मेरे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो आप एकेडमिक काउंसलर्स या जो लेक्चरर्स की आप बात कर रहे हो, अगर मैंने रिसर्च के लिए ऑप्ट किया है तो रिसर्च गाइड भी वही रहेंगे या दूसरा रिसर्च गाइड रहेगा कोई? MSW की के लिए सवाल करें क्या? हाँ, रिसर्च, अगर MSW 1 में मैंने सोशल वर्क एंड रिसर्च लिया है, MSW 2 में मैंने प्रोजेक्ट डेसर्टेशन लिया है, सो फिर रिसर्च गाइड प्रोवाइड किया जाएगा? जो आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर होते हैं वो ही आपको डिसर्टेशन के लिए गाइड करते हैं। एक उसकी परफॉर्मा एक हैंडबुक है, हैंडबुक ऑन MSW P001, वो भी अपलोडेड है ई ज्ञान कोश पे। आप उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे कैसे हाउ यू गो अबाउट, लाइक फर्स्ट आप प्रोसेस क्या होगा, कैसे आप उसका अप्रूवल लेंगे। एक अप्रूवल की भी परफॉर्मा उसमें अटैच की गई है। आप पहले एक सिनॉप्सिस लिखते हैं, उसका अप्रूवल लेते हैं, एक बार अप्रूवल मिल जाता है आपको एकेडमिक काउंसलर से, जो भी आपको फील्ड वर्क सुपरवाइजर है। वो उसके बाद से आप डिसर्टेशन अपना तैयार करते हैं इन डिस्कशन विद द सुपरवाइजर।
बिकॉज आपको एक रिसर्च टूल डेवलप करना पड़ेगा, आइदर अ क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू शेड्यूल। आपको वो जो चैप्टर्स प्रॉपरली लिखने होंगे, वो कैसे कैसे चैप्टर्स भी लिखें, क्या क्या आप टॉपिक्स चूज कर सकते हैं, काफी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी उसमें दिया हुआ है, तो आप जरूर से हैंडबुक देखें। योर डाउट्स विल बी क्लियर, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल देयर। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जो ओरिएंटेशन विजिट्स हम बताए थे, मतलब प्रेजेंटेशन में 4 to 5 ओरिएंटेशन विजिट लिखे थे, तो ये 4 to 5 2 years, मतलब 2 पहले 2 सेकेंड ईयर में ऐसा है, या 5 ओरिएंटेशन विजिट इन अ ईयर? 5 orientation visits in MSW L13 and 5 orientation visits in MSW L15। दोनों साल 5-5 करने हैं आपको, अलग अलग संस्थाओं में। एंड अगर समझ लीजिए कि ये ओरिएंटेशन का हो गया, सो फिर ये ओरिएंटेशन अभी प्लान कैसा होगा, मतलब ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन हमारा एडमिशन भी नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू मतलब जैसा आप बोला था कि एग्जाम्स वगैरह जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के जनवरी में होंगे, तो एग्जाम्स भी पोस्टपोन्ड होंगे, ओरिएंटेशन भी पोस्टपोन्ड होंगे, या उनका क्या सीन है ये सिनेरियो में? देखिए, इस पैंडेमिक ईयर में तो रिवाइज गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ने ये सब सारे स्कूल्स में जिसमें भी फील्ड वर्क है, यूनिवर्सिटी की तरफ से डायरेक्शंस आए और हम सब ने ये नया रिवाइज गाइडलाइंस बना के अपलोड किया था इग्नू के वेबसाइट में मई के मंथ में फॉर जून एंड दिसंबर 2020, जहाँ पे स्टूडेंट्स नीड नॉट वेंचर आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से ही वो ऑनलाइन फील्ड वर्क करने की सुविधा दी गई थी, कंसिडरिंग दी पैंडेमिक सिचुएशन की आप बाहर नहीं निकल सकते, इट्स नॉट सेफ टू विजिट। नाउ इन द नेक्स्ट, और ये वन मोर थिंग, MSW इज नॉट अ सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम, इट्स अ एनुअल प्रोग्राम। तो जो एग्जाम होते हैं आपके 1 साल के बाद होते हैं पहला एग्जाम। जैसे अगर आपने अभी एडमिशन लिया तो यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर योर एग्जाम्स इन जून 2021, बिकॉज आपका जुलाई सेशन है, जुलाई 2020 के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जून 2020 में जो टर्म एंड एग्जाम होगा वो आप दे सकेंगे। आने वाले टाइम में सिचुएशन कैसा रहेगा, कितना सेफ रहेगा, nobody can say as of now. As of now, any extension of the revised guidelines will be done or not done. This also, at this point of time, I cannot say. If the university thinks that the revised guidelines should be extended for one more term, it will be done and it will be notified on IGNU website. इसलिए मेरी आप सबों से ये अपील रहेगी कि आप इग्नू के वेबसाइट को वीक में जरूर 2 बार तो जरूर ही देख लें, क्योंकि ऑल दी अपडेट्स इज देयर ऑन दी इग्नू वेबसाइट, सो यू मस्ट गो थ्रू इट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक टू सी कि कोई रिवाइज गाइडलाइंस आई है कि नहीं, उसके न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में जरूर देख लें। एवरीथिंग इज अपलोडेड, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम दैट वे, एंड इवन इन योर RC मुंबई का सर ने आपको बताया कैसे वेबसाइट में सारी कुछ दी गई है, सारा इंफॉर्मेशन वहां भी अपलोड होता है, एज वेल एज जो इग्नू का वेबसाइट है उस पर भी अपलोड होता है। तो अकॉर्डिंगली इट विल बी प्लान। जब आप सुपरवाइजर से बात करेंगे, आप जब अपना फील्ड वर्क शुरू कर रहे होंगे, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या रिवाइज गाइडलाइन के थ्रू आपको करना है या जैसा नॉर्मली प्लान है फील्ड वर्क वैसे करना है। तो अगर नॉर्मली प्लान होगा तब तो आप विजिट करेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और आप ओरिएंटेशन विजिट्स करेंगे, और नहीं तो फिर आप रिवाइज गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। Okay. And ma'am, will a WhatsApp group be formed of matlab of this batch July 2020 session? That or is like any updates? between all of you, all these students. If you feel after this webinar you should be connected, that you can, anybody can take a lead and do that. कोई आपको इससे रोक नहीं सकता। Okay. Okay. Thank you, ma'am. Yes. यस, आपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात की है, बट जस्ट रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, कई बार आप लोग क्या करते हैं, किसी नए स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं, बट दे आर नॉट अवेयर कि यहाँ पे आरसी अवेलेबल नहीं है, तो वो वहाँ पे कुछ तो होता है, और फिर वो रीजनल सेंटर में आके पूछते हैं कि आपने ऐसा ऐसा बताया हमको। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो भी होते हैं वो आप स्टूडेंट्स के बीच में ही होते हैं, उसमें कुछ भी ऑफिशियल नहीं होता है। इसके लिए जैसे मैम ने भी बोला, कुछ भी ऑथेंटिकेट जानने के लिए आप लोग हमेशा सिर्फ वेबसाइट पर ही बिलीव करिएगा। मेरे ख्याल में 2-3 नाम और हैं मैम, हम उनको भी ले लेते हैं। Sure. इट विल बी भाग्यश्री।
Bhagyashree. Sir, you skipped my name. What Hello, is your sir. name, ma'am? Yeah, you skipped my name. Yes, ma'am. I will come to you. Sorry, but first we will take Bhagyashree then. Yeah, sir. I got my answer. Yes. Okay, then Madhura. Yeah, see, my question is when will the assignments link for this July batch 2020 open? You said that there is a previous year assignment link, right? Yes, it should be uploaded. There was a problem with the AR printing in our school. It was done already, but due to COVID, there was some emergency, and that is why it got delayed. Otherwise, usually it is uploaded by the month of July. So, due to certain unforeseen circumstances, it is delayed, and I will get it uploaded as soon as possible. Today, I'll again contact him because of there was a death in his family also due to COVID, and that is why I was just not pressurizing. So it will be done as soon as possible. Okay, fine. Thank you. Thank you. Then I think योगिता थोम्बारे सर प्लीज शेयर द सॉफ्ट कॉपी लिंक. मैम आज के सेशन के बाद आप सबको एक ईमेल भी जाएगा जिसमें रिकॉर्डेड सेशन होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे. उसमें आपको हम सॉफ्ट कॉपी का लिंक एग्जैक्ट कहाँ पे मिलेगा MSW वो लिंक हम आपको शेयर कर देंगे. आई थिंक प्रियंका मागर आपका क्वेरी हो चुका है अगर मैं सही हूँ तो. Yes, but I have one more query. Can I please ask? यस मैम बोलिए. हाँ, सो हमारा रीजनल सेंटर कुछ और है, बट वी आर स्टेइंग इन सम अदर स्टेट. हम वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड वी कैन डू आवर असाइनमेंट एंड फील्ड वर्क ओवर देयर, राइट? यस, देखिए जो भी मैम ने अभी बताया, आपको एक सुपरवाइजर की जरूरत है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, मैम ने प्रेजेंटेशन में बताया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, वो सारी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रही हैं तो आप कहीं से भी कर सकती हैं. बट सी आपका जो फाइनल सबमिशन है दैट शुड बी एट योर रीजनल सेंटर जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं. ओके, तो एग्जाम सेंटर चेंज नहीं हो सकता एंड नॉर माय सबमिशंस. See, just this important thing for you all. Examination center, study center and regional center. See, regional center is basically an administrative office जहाँ पे आपको कोई normal queries हैं तो आप पूछ सकते हैं. Study center basically it was for assignment submission and for academic counseling sessions. अभी academic counseling sessions are online being organized by study center. Assignment submission, due to this COVID pandemic, the assignments are to be handwritten only. सारे असाइनमेंट्स हैंड रिटन ही होने चाहिए, बट सबमिशन द यूनिवर्सिटी हैज मेड इट स्कैन कॉपी. यू हैव टू स्कैन द असाइनमेंट्स एंड यू हैव टू अपलोड. इवन नाउ फॉर आई थिंक फॉर योर सेशन स्पेशली June 2021 session onwards, the university is launching a portal for all the learners irrespective of their regional center. इसके पहले the regional centers used to have their links, but now there will be one portal where you can upload. थर्ड थिंग अबाउट एग्जामिनेशन सेंटर, आपका रीजनल सेंटर चाहे जो हो, स्टडी सेंटर चाहे जो हो, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे होंगे उस समय आप ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. हाँ, अपना थियरी एग्जाम्स आप कहीं भी लिख सकते हैं. हाँ सर, थैंक यू सर. आई थिंक प्रियंका मालकर, मंगेश सावंत, आपका कुछ क्वेश्चन है? Okay, it was for WhatsApp only. I think. Sir, you skipped me. I have one more query. This is Kishan. Okay, yes, ask. Is this reading material available in audio version? No, see, the thing is, this is the reading material, the study material. First thing is very bulky. आपको जब एक बार material मिलेगा, because I think ma'am also explained. The study material of IGNOU is very qualitative. There are, I think, one Commonwealth Awards also that we'll not discuss anyhow now. The thing is, this material ka audio mein there is no availability. Though there are some audio video cassettes which were available at study center, but nowadays I think they are not operable. Maybe we can find out later on.
But there are one important thing. You all should know. IGNU has a separate channel called as Gyan Darshan, separate radio channel called as Gyan Dhara. अगर आप ज्ञान दर्शन पे जाएंगे या ज्ञान धारा पे जाएंगे, उसका भी शेड्यूल लगता है, हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड होता है और हमारी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे भी अपलोड होता है, पूरे महीने का शेड्यूल है। तो शेड्यूल में आप जाके देख सकते हैं कि एमएसडब्ल्यू का कोई लेक्चर या ऐसा सेशन होता है क्या, जहाँ पे मैम भी कई बार वहाँ पे रहती हैं और एमएसडब्ल्यू के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके डिस्कशंस होते हैं। तो ऐसे वीडियोस या फिर आई थिंक एमएसडब्ल्यू के कुछ थोड़े बहुत वीडियोस, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, इग्नू का जो पेज है वहाँ पे भी आपको मिल सकता है, बट रीडेबल मटेरियल पूरा का पूरा ऑडियो में अवेलेबल नहीं है। ठीक। हाँ, ज्ञान वाणी है रेडियो चैनल, एफएम रेडियो चैनल, तो उस पे एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे तो हम रहते ही हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम उस पे हो रहा होता है, सोशल वर्क, स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क से, कभी एमएसडब्ल्यू, कभी बीएसडब्ल्यू, कभी कोई ऐसा कॉमन टॉपिक जो कि हमारे लर्नर्स के लिए यूजफुल हो सकता है। और जैसा कि सर ने बताया, वो शेड्यूल अपलोडेड रहता है इन एडवांस, 1 महीने पहले ही वो अपलोड हो जाता है। ज्ञान धारा भी है जहाँ पे उसकी स्ट्रीमिंग होती है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेल के थ्रू भी, या लाइव सेशन होता है, आप फोन इन सेशन है तो उस दौरान भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जब ये रेडियो का प्रोग्राम होता है। साथ ही साथ SOSW का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे अपलोडेड है वीडियोस, और बहुत सारे वीडियोस और भी हैं जो कि अपलोड होते रहते हैं टाइम टू टाइम, so you can always approach that and any ठीक है, अभी ऑडियो तो नहीं है, but in future we will take your point and we will work towards it if we can develop, but it is very bulky as sir said, बहुत डिटेल्ड में ये आपका कोर्सेज डेवलप किया जाता है after you know lot of efforts। पुराने लेक्चर्स के भी कुछ वीडियोस अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे? हाँ है, वो आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे अपलोडेड है, फील्ड वर्क से रिलेटेड तो बहुत सारे हैं, एज वेल एज कोर्सेज से रिलेटेड भी है। एंड जो वी हमारे कीप लेक्चर्स होते हैं, जो हमने कहा कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, उसके भी वीडियोस हो सकते हैं अवेलेबल? ये तो आरसी ने भी अभी कुछ टाइम पहले, मुझे याद है पैंडेमिक के, आरसी मुंबई ने ऑर्गेनाइज किया था पैंडेमिक के दौरान इनिशियल मंथ्स में एक वर्कशॉप फील्ड वर्क को लेके, आई थिंक वो भी अपलोडेड होगा आरसी के वेबसाइट पे, क्योंकि सर आपने शेयर किया था वो, काफी मुझे याद है मेल में भी आया था। हाँ यस मैम, बिकॉज वो यूट्यूब पे हमारे अवेलेबल है, वो लिंक भी हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देंगे, जिसमें मैम ने और मैम की पूरी टीम ने, हमारे स्कूल ऑफ सोशल वर्क के सारे टीचर्स ने, उन्होंने मिलकर फील्ड वर्क के ऊपर ही एक स्पेशल लेक्चर लिया हुआ था। जैसे कि एक स्टूडेंट और अभी बात कर रही थी कि कुछ मिल सकता है क्या, तो ये सारी चीजें उसमें डिस्कस की गई थी, तो आप सब लोग वो भी रिफर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे यूनिवर्सिटी के मेन फेसबुक पेज पे जाएंगे तो वहां पे भी कई फेसबुक लाइव सेशंस होने लगे हैं आजकल। सोशल वर्क का आपको मिलेगा कि नहीं, थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा, पर हर प्रोग्राम के हुए हैं वहां पे, तो वहां से भी आपको ओवरऑल कई मीडियम्स बहुत सारे हैं आपको नॉलेज लेने के लिए, और इग्नू ने कई सारे मीडियम दिया, आपको टीवी चैनल दिया है, रेडियो चैनल दिया है, मटेरियल दिया है, तो कई सारे मीडियम है। द ओनली थिंग इज यू हैव जस्ट हैव टू सर्च और यू हैव टू आस्क कि यहाँ पे मिल सकता है क्या, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ मीडियम्स, प्लेंटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल फॉर यू टू गेन मोर एंड मोर knowledge about everything. Anyhow, thanks, thank you. So I think all the names in the chat box are clear now. So I just believe that all of your queries have been sorted out. So सबसे पहले जैसे कि हमारे रीजनल डायरेक्टर सर भी हर इंडक्शन मीटिंग में कहते हैं that this induction meeting is just a beginning. आप लोग अभी सिर्फ एंटर कर रहे हैं इग्नू के सिस्टम में, आपका 2 साल का जर्नी है, वी होप कि आप 2 साल का जर्नी आराम से 2 साल में कंप्लीट कर लें, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो रीजनल सेंटर मुंबई है। और जैसे मैम ने भी बोला, वी ऑल नो कि एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट्स को हम वेरी कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं यहाँ पे आने के बाद कि यू सेंड ईमेल टू मैम, बिकॉज वी नो दैट मैम रिप्लाइज टू द क्वेरीज
email. इसके अलावा आप सभी लोग कभी भी रीजनल सेंटर के फोन नंबर पे ना डिपेंड होकर रीजनल सेंटर के ईमेल आईडी पे ज्यादा डिपेंड होने की कोशिश करिए। हमारा रीजनल सेंटर आपको ईमेल की रिप्लाई या तो 1 और 2 आवर्स में दे देता है, और अगर कुछ वेरिफिकेशन की जरूरत है तो 1 या 2 दिन लग जाता है। तो अगर आप ईमेल करेंगे तो आपको ईमेल्स पे सारे रिप्लाई मिल जाएंगे, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी ये पूरी जर्नी सॉफ्टली चलती जाए। बाकी सारे अपडेट्स आपको अब धीरे धीरे आने लगेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आई थिंक वी ऑल शैल थैंक Dr. Soumya Madam for taking out time from her busy schedule and guiding you all and guiding all of us regarding this MSW program. So, ma'am, once again, thank you very much on behalf of Regional Center, our Regional Director, and all the students of Regional Center Mumbai. Thank you very much, ma'am. I think sir का meeting आई थिंक सर का मीटिंग अभी भी चल रहा है वहाँ पे आरएसडी डायरेक्टर और बाकी रीजनल डायरेक्टर मीटिंग में, दैट इज व्हाई ही कुड नॉट जॉइन। अदरवाइज वी हैड प्लान कि सर भी आते। सो एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर कमिंग एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स। Thank you, sir. Thank you, and you've been very supportive, and it's really pleasure for us as well, because RC Mumbai is really very active in organizing and addressing students' issues and organizing such webinars so that students get to know from first-hand information. So it's a great effort, great team at RC Mumbai, and it's always a pleasure to interact with students. So thank you to all the students. Thank you to RC Mumbai, especially to the regional center team, regional director, and sir, to you as well. Thank you all. Thank you very much, ma'am. With your permission, I think, ma'am, we can close the session now. Yes, sir, please. Okay. Thank you. Thank you. Thank Dear you. learners, we are closing this session. Thank you. Thank you. Thank you.